I, Dr. Tanushree Verma, welcome you all in this 3 days online training program on role of disaster management plan to enhance the resilience of education institution building, an initiative by National Institute of Disaster Management, Government of India, which is a premium institute for training and capacity development program for managing disasters in India and on at the regional level. This program is being organized in collaboration with Sangam University, Rajasthan. As we are aware that during the ASEAN Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, AMC DRR 2016, the Honorable Prime Minister of India listed 10-point agenda for disaster risk reduction in the country. The all-inclusive agenda present a holistic approach for disaster risk management to address a whole range of issues. And point 6 of the agenda call for building of network of universities to work on disaster issues. This initiative has been taken under that point of the Prime Minister 10-point agenda, under the overall supervision and guidance of resilient infrastructure division of NIDM. And before initiating the inaugural session, I will request all the participants who are joining to kindly keep your mic on mute. And also I'll request honorable guest and speakers to kindly adhere to time slot for fruitful discussion. With this, I would like to welcome Honorable Chief Guest of the program, Sri Rajendra Singh Sir. Rajendra Singh Sir is currently a member, National Disaster Management Authority, and former Director General, Indian Coast Guard, to give Indian Coast Guard. During his service as a Director General, Singh Sir was awarded with Tantra Raksha Medal on 15th August 1990 and later President Tantra Raksha Medal on 15th August 2007. Sir has also served as a Chairman of National Maritime Search and Rescue Board, Chairman of National Oil Spill Disaster Contingency Plan, and National Competent Authority to support oil spill response under South Asian Cooperation Program. I welcome you, sir, for this program and request you to kindly motivate us with your insight and thoughts. Thank you, sir. Over to you, sir. Sir, you are on mute, sir. Kindly unmute yourself. Thank you, Tanushree, for kind words. First of all, I would like to, good afternoon, everybody. I would like to express my sincere appreciation for the efforts being taken by the National Institute of Disaster Management, that is NIDM, collaboration with the Sangam University, Rajasthan, and John Ford Solutions to organize this 3 days online training program on the role of disaster management plan to enhance the resilience of education institutional building. We all know, and it is the known fact that disasters are increasing exponentially due to the rapid urbanization, unplanned development, extreme weather conditions, and events in recent years, and compounded by many other factors like we are not prepared, prevention, and there are so many other factors are there. In 2018, Asian Ministerial Conference in Disaster Risk Reduction in Mongolia emphasized the need to incorporate disaster risk reduction education at primary, secondary, and tertiary levels and professional training institutes. Reiterating the same, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has outlined 10th agenda as an effort towards disaster risk reduction. And Agenda 6, if you see, emphasize on developing the network of universities to work on disaster issues. With the novel ideology of fostering of culture of disaster resilience and leveraging the interest in the youth and young professionals and creating a sense of social responsibility in them. It is utmost important to integrate disaster management in various universities and institutions. Engagement and involvement of research-based organizations such as communities and other such institutions in disaster risk reduction is now a need of the hour.
And universities and colleges have the capacity to educate, research, and bring all stakeholders together to share their experiences, increase the knowledge base, and facilitate improved decision making for policy and practice. Since the university is the center of excellence with regards to research and disseminating research output to end users. The need of us, we have through this university and colleges, we have to develop the culture of disaster management in India. And it will come when we are sharing, when we will have the culture of information, culture of knowledge, culture of information sharing, culture of lesson learned, and culture of preparedness, and culture of disseminating information at the grassroots level. So cities and institutions are also well equipped in carrying out research for excellence and can help in creating a knowledge base in the field of disaster management and risk reduction. Considering the dynamic and challenging difficulty presented by each disaster, it is now imperative to live with academic institutions to mitigate the effect the disasters in the country. In this endeavor, to collaborate with prominent academic institutions and practitioners to understand the current policy framework for academic institutions in disaster risk reduction and the current role played by academic institutions and conceptualize the possible way forward. It is our role. ये हम सबकी जिम्मेवारी है यूनिवर्सिटी से कॉलेज तक कि हम लोग कुछ इस तरह का कॉन्सेप्टलाइज करें पूरा पेपर सबके साथ मिल करके ताकि इन डिजास्टर को हम कम कर सकें. एनडीए में है the activities of inclusion of disaster management related subjects, including sensitization programs, training programs, workshops, seminars, conferences in premium training academic institutions. Currently, with NIDM, it has got included in 100 plus training institutions or universities or colleges with this form. Over the first 5 years of the Sendai framework, we are able to develop global network of universities working together and problems of disaster risk management in academic network for disaster resilience in Europe and DROI and Asian University Network Environment and Disaster Management and many others. As part of this network, different universities could specialize in multidisciplinary research on disaster issues most relevant to them. If some universities are there in hilly area, they should expertise themselves in that landsliding and other issues, forest fire. If the universities are in a coastal area, they should expertise themselves in cyclone, tsunami, other issues. Same time, in the university in central India can exercise themselves in a drought area or in a flood like situation in UP and other states. University and an academic institutions may need to develop and organize comprehensive education disaster program for curriculum of the community. The university could also assist in identifying disaster risk reduction policy and measures, including prevention, mitigation, action, coordinating global support initiative, developing guideline information, and nurturing the development and strengthening the regional, national, and local network. This kind of collaboration between NIDM and universities will promote a common understanding among stakeholders that underlines the importance of
disaster resilience education and will raise awareness in improving the disaster resilience. I once again wish all the success for this program and hope more such collaborations would happen in the future between various other universities and ideas for mainstreaming DRR in the educational sector. Thank you very much and good luck to you and all the best for 3 days seminar to NIDM, to Sangam University and Zone 4 Commission. Thank you. Thank you, sir, for your valuable inputs and presenting us the complete scenario of various initiatives being taken under Agenda Point 6 of the Prime Minister 10-point agenda. Sir, you have rightly pointed out that with the culture of sharing, culture of information, distribution, developing network of university at regional, national, and local level, we will be able to use this force of youth which are from this academic institution as a research center in the field of disaster risk reduction. Thank you, sir, once again for joining us and sharing your valuable input, sir. With this, I would now like to invite Professor Karunesh Saxena, Honorable Vice Chancellor of Sangam University, Bhilwara, Rajasthan, for introduction and welcome address. He has more than 35 years of corporate and academic experience. He has served Dr. H.S. Gaur University, Sagar, Madhya Pradesh, and Vikram University, Ujjain, Madhya Pradesh, Jammu University, Jammu, IGNOU, and New Delhi. He was ex-chair professor ICCER, a Government of India Institute, New Delhi. He has created nearly 200 educational films of UGC. Recently, he was nominated by UGC New Delhi to a high-power committee for implementation of National Education Policy 2020 and also PhD Regulation 2022. I welcome you, sir, and request you to kindly give introduction and welcome. Thank you very much, and good afternoon to all of you. Honorable Shri Rajan Singh Ji, member NDMA, which is the apex body for managing disasters in our country, which is headed by our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi Ji. The real, you can say, brain and power behind this organizing this program, Dr. Tanushri Verma from Zone 4, Dr. Garima Agrawal from NIDM, and Professor Bhandari from Sangam University. Dear participants, it gives me immense pleasure to put on record my sincere appreciation to all these organizing bodies to give Sangam University this invaluable chance of partnering with such prestigious organizations such as NIDM and Zone 4 in organizing this event, which will, I think, go a long way in creating a kind of a history for Sangam University, as nearly 200 students and faculty members have joined the program and they are keenly listening to the deliberations in this 3 days program. And I'm sure that they will learn various invaluable disaster management tips and techniques, which they can apply in their day-to-day life to make their society also quite safe. Friends, I would not take much of your time because immediately after the inaugural, I am going to have a full technical session where I am going to speak about application of information and communication technology in managing disasters. And I would fully agree with Shri Rajan Singh Ji when in his inaugural remarks, he was mentioning that the universities can take lead and can develop some specialized areas for contributing towards disaster management. And so I would like to tell you that in Sangam University, we have an excellent computer science department. And that is the reason why I have chosen this particular topic, so that it represents some kind of interdisciplinary research notions actually. But coming back to my inaugural comments, let me tell you, sir, that Corona pandemic was the biggest threat that the whole world has actually faced in the recent 3 years or so. And you all might be quite aware about
the Bhilwara model that was developed as soon as the first wave started in March. It was March 2020. In March 2020, 68 cases were reported from Rajasthan, out of which 28 cases were reported from Bhilwara itself. And that created a kind of a trigger. And I vividly remember that time the then collector, Shri Rajendra Bhatt, IAS, and the then SP, Shri Harendra Mahavar, IPS, both of them sat together and devised a very, you can say, noble plan of managing this disaster of corona pandemic, because the fear of the unknown was the greatest, and people were not knowing much about the COVID in the initial period. There was all, you can say, whole system has gone haphazard, and during that period, they have actually a wonderful program for this managing this disaster, which became popular all over the country as the Bhilwara model. And it was discussed in the Prime Minister's office. It was also taken up by Rajasthan Chief Minister to replicate in other districts of the state. It was also suggested by the Rajasthan CM to other state CMs that they can also implement it. How did they manage this Bhilwara model, and what is the role of Sangam University in managing that that particular disaster? I will take only 3 to 4 minutes in highlighting this particular aspect, that the whole city of Bhilwara was divided into 12 zones. And you will be glad to learn that Sangam University NCC cadets did remarkably well during that corona pandemic. Our students were deployed in these 12 zones, and 3 shifts were there. They were working under the guidance of one government school senior teacher or principal and one medical personnel. And then these cadets, they did not bother about their own lives, and they did commendable work in terms of creating awareness. Then they were instrumental in distributing 70,000 masks to the citizens of Bhilwara. Can you believe the magnitude? 70,000 masks were distributed, and they were also managing, helping the administration in managing law and order in terms of keeping the requesting citizens to remain indoors and all those things, maintaining traffic things. Even if somebody comes out and repeatedly coming out, then they helped in this thing, issuing challans also to those erratic persons. So a lot of work was done by NCC volunteers of Sangam University in association with the district administration. And let me tell you with pride that is why the Bhilwara model was so successful and was replicated all over the country. In recognition of this effort by our NCC volunteers, our NCC nodal officer, Lieutenant Rajkumar Jain, received the Raksha Rajya Mantri Award from the Minister of State for Defense, Shri Ajay Bhatt. He has given this award to only 4 nodal officers all over the country, and from Rajasthan, Rajkumar was the only one, which was given in recognition to the work that was done by volunteers under his leadership. So I think that this whole program of 3 days will definitely bring out the desired inputs for all the participants, and I am sure that they will be enjoying, they will be learning, and they will be taking away the tangibles from this workshop so that they can apply it in their real life situations. And I am also told by NIDM authorities that the diligent participants who continue to listen to all the sessions, they will be also issued with the e-certificate, which is given by NIDM MHA, Government of India, which is going to be a prestigious one. So my request to all the participants is that you remain glued to your screen and try to capture whatever the resource persons have to offer to you. And also it is better that if you are ready with pen and paper and jot down the relevant points for your pondering later on. Again, I would like to, as the head of the family of Sangam University, I would like to extend very hearty welcome to our chief guest today, Shri Rajan Singh Ji,
who has taken out time from his very busy schedule to be with us today. Dr. Tanushree Verma for organizing this program in a very nice manner. Dr. Garima Agrawal, who is, I suppose that she is going to be the resource person after my my technical session is over, and all the office bearers of Zone 4 as well as NIDM for giving Sangam University this opportunity. So a hearty welcome from my side. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. And you have the model which you have just discussed, the Bhilwara model of Rajasthan. Actually, NCC and NSS cadres and one Government of India scheme, which Rajendra Singh sir himself is leading, Abda Mitra scheme, they are all the youth volunteer, and if they can train well in the various skill of disaster risk reduction, they can certainly contribute to a large extent in minimizing the impact of any hazard or any disaster happening around us. Thank you, sir, for giving your inputs on the topic. Now I would like to invite Dr. Garima Agrawal. Tanushree, Rajendra Saab ko lete ek minute. Sir, please. Thank you, Karnesh ji. Thank you, Dr. Saab, for your valuable inputs. And we know that during the COVID time, Bhilwara model was the top of the country, and how you people have done. So my compliment and my appreciation to your NCC or NSS, your team and your voice. And I didn't know that this university is in Bhilwara. It was my friend, and I thought Nakulji will guide me where this university is situated. But definitely, by hearing from you, I will definitely make a point to come one of these days, coming weeks or months. I'll come and personally visit your university, and personally, I would like to interact with each and every student and faculty member there. Because this year, our Raising Day was on 28th of September. Our NDMA 18th Raising Day was there, Formation Day. This year, our theme was volunteerism. तो इस समय का जो थीम है और ये जो हम लोगों ने ट्रेनिंग शेड्यूल लिया है चंदन घोष और लोगों ने, तो बहुत एप्ट है, and we want to reach to the universities and college. So now we are now, like she said, Abda Mitra scheme. Now we are in the phase of launching second Abda Mitra scheme, where we want to train 1.25 crore volunteers from NCC, NSS, NYKS, Civil Defense, Bharat Scout and Guide. We want to take everybody to, they should, each and every boy, each member of family, one member of family should know what is disaster, what is DRR, what is mitigation, how to prevent it. If you cannot prevent it, can you mitigate? If you cannot mitigate, can you prepare yourself? If you cannot prepare, can you develop your capacity building? So we will definitely come to university, and thank you very much, and personal interaction with you. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Most welcome to visit our university. We'll be honored, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू सर. करुणेश साहब, हम लोग अरेंज कर देंगे. मैं अरेंज कर लूंगा. राजेंद्र साहब, मैं बताऊंगा आपको, फिर सब मिलके चलेंगे. बहुत बढ़िया. Most welcome to all of you. Thank you. ठीक है. So next, I would like to invite Dr. Garima Agrawal, Senior Consultant of Resilient Infrastructure Division, and she is the one who actually conceptualized the program, and we were in day-to-day discussion every day, like we used to discuss the concept, program schedule, and come out with such a wonderful program. We are able to now implement it. So she is currently working with the Resilient Infrastructure Division of NIDM, and Dr. Garima has about 18 years of experience in disaster risk management. She has worked with UNDP India for about 16 years and supported Government of India Ministry of Home Affairs in implementing many national level programs and in schemes on disaster risk reduction. Academically, Dr. Agrawal is PhD in Geography from Delhi School of Economics, Delhi University, from Center for Environment Planning, Technology University, Ahmedabad, and she has completed her master's in Geography from Delhi School of Economics, Delhi University. I request you, Dr. Garima, to kindly give a context setting and overview of the program.
Over to you, Dr. Rehema. Thank you so much, Dr. Tanushree Verma, for this nice introduction and conducting this program. First of all, on the behalf of National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India, I would like to welcome all the dignitaries, panelists, participants, and the organizing team in this 3 days online training program on role of disaster management plans in building resilience of the education sector, organized by NIDM in collaboration with Sangam University, Rajasthan. It's my pleasure to be on the platform with our Honorable Ranjendra Singh, member, NDMA. Thank you, sir, for joining this event. As you always have been very supportive to us, and we feel highly motivated to have you here all the time. Thank you so much, sir. And the Vice Chancellor, Dr. Karunesh Saxena, Sangam University, Professor Chandan Ghosh, Head Resilient Infrastructure Division, NIDM, Mr. Nakul Kumar Tarun, Director, Zone 4 Solutions, and Dr. Tanushree Verma in this session. Due to some official exigencies, our Executive Director, NIDM, Mr. Taj Hassan, could not join this program. However, he has shared his best wishes for the same. As you all are aware that for 2 days, there is a 2 days ministers meeting is going on in Faridabad of Home Ministers. Actually, this meeting has been chaired by the Home Minister. So he has to attend that. So that is one reason he could not come for this program. As you all know that NIDM is an institution for building capacities of various stakeholders in the field of disaster management. And we are reaching out to the various communities and stakeholders through face-to-face training programs, online webinars and trainings for sensitizing them and to encourage them to build this culture of prevention. As you all know that India is vulnerable to various hazards, being earthquakes, tsunamis, landslides, floods, cyclones, and fire, and so on. And the disasters occurs when a hazard actually interacts with the vulnerability, and that is how human dimension, which depends upon a number of factors that could be poverty, disability, education, shelter, livelihood, population density, implementation of building codes and safety regulations, environmental degradation, and so on. So you all will agree with me that reducing vulnerability is one of the most effective way to reduce the disaster risk. As already highlighted by our honorable member RK, that education sector is an important sector to evolve the new research, sharing the new work actually, and to develop network of universities in the field of disaster management. Creating new knowledge and innovation is an area which always belong to the universities and all the academic institutions who are working at the research level. Towards this cause, recently in collaboration with NIDM, UGC actually has taken initiative, and they have introduced 6 months compulsory course on disaster management at UG level and PG level. So this course curriculum has also been developed by NIDM along with UGC. And I would definitely request the VC to take some initiatives for implementing these courses in their university, in his university. And in addition to that, I would like to congratulate him for the pandemic model which he has discussed just now. And it is really encouraging to know that how your university is working in Bhilwara district, and how you are supporting the other communities as well, which is extremely important when we talk about disaster management. We also have a university network, as our honorable member has already discussed with you, that we can, all the institutions and universities, we encourage them to actually get registered themselves into this India network of universities and institutions. And this is being hosted at NIDM website, and more than 200 institutions have already registered in it. So even Sangam University can also apply for that and can be a part of that network. To understand the significance of today's training program, we actually need to understand that what we are calling as an educational buildings over here, and who all we are talking about. The education sector is actually comprised of all the establishments whose have prime objective to provide education, and it could be consisted of all the education providers such as schools, colleges, universities, community organizations, agencies, and also the informal businesses or formal businesses like coaching centers, training institutes, tuition centers, Shiksha Kendra, Anganwadi, and other private academies, which actually are the skill development units
and they could be private or public or non-governmental or established formally or informally, but they contribute in a major way in development of education industry in India. So we need to understand that the importance of disaster resilience to all the buildings of education sector, who houses an important segment of our society and tomorrow's future of the country, and that is students of different age groups. We are talking about youth, but we also know that how much it is important to ensure safety and security of the toddlers, the kindergarten school children, the teenagers, those who are housed in schools and various kind of such organization I spoke about, and to ensure that how safe they are. So when students are in the school or education institution, it becomes a responsibility. The responsibility of the concerned authorities actually to provide them a safe and disaster resilient environment. So Government of India has already put in place a legal framework through enactment of Disaster Management Act in 2005, Disaster Management Policy in 2009, National Disaster Management Plan in 2016, which was revised in 2019, which talks about promoting disaster resilience across various administrative units and 9 departments. And we have observed that now many schools and colleges and private institutions have started preparing their disaster management plans. And they also make their evacuation route maps, putting up fire extinguishers in the corridors and conducting mock drills. But these DM plans actually sometimes remain limited to focus on evacuation and response guidelines or instructions of the government. In order to complete the instructions of the government, we need to get involved to prepare more comprehensive plan which encompasses all the segments involving mitigation, preparedness, and response. There have been several such cases in the past where students were trapped in the fire or building collapse due to earthquakes, caused deaths and injuries of previous lives for the small children. Be it an example of Kumbhakonam fire, or earthquake in Gujarat, or Kashmir earthquake, or Surat Takshila coaching center in 2015, I think, fire accident which happened, and almost like 22 students died due to suffocation and falling from the rooftops, as there were no escape routes. The institution was running on the rooftop, which was built on a temporary structure. And there are many such coaching centers which are running for preparation of UPSC engineering and medical exams, which are running at marketplaces, residential areas, and congested locations, which do not have a proper classrooms and evacuation routes. In schools and colleges, still we have spaces to evacuate, and there is a possibility of immediate evacuation at playground. However, in these institutions, we lack proper such arrangements like spaces, lighting, windows, open areas. So when their classes are happening, there is not less than 200 students under one rooftop, and they are running as an institution with so many children. So the reasons of such incidences can be taken related to the poor building designs, bad quality of construction, lack of provision of disaster resilient features, poor maintenance, and lack of open spaces. Apart from the structural issues, there have been several non-structural elements in a building, like architectural elements, the mechanical part of the building, electrical equipment, and which actually cause damage of the building as well as threaten the lives of the people who are occupied in the building. So and sometimes like almirah, table, chair, computers, even these loose elements can cause damage of a building during an earthquake, or also cause some loss of lives and injuries. So in this 3 days training program, we have planned to discuss the importance of disaster management plan in enhancing the disaster resilience of education institution. So we will discuss about the concepts of hazard, risk, vulnerability. We will discuss how to prepare a DM plan for a university, for a college. We will talk about the various mitigation measures which are required to be adopted for making a building resilient, and we will try to draw a way forward to enhance disaster resilience in education sector. So with this, I once again welcome each and every one of you in this training program. And as our VC sir has already said, that please take advantage of these 3 days of deliberation and take your notes and keep glued to this screen so that you take most advantage of this training program. Thank you very much.
Thank you, Dr. Garima. And you have rightly said that disaster management plan is an important aspect of preparedness, and each university or college or education institution must develop a comprehensive disaster management plan, not for the sake of submitting some government report, but programs would have all this section of preparedness, mitigation, response. And I hope Sangam University will also take initiative of developing this DM plan as per the guidelines of Government of India. Now I would like to invite Professor Chandan Ghosh sir for a keynote address. Professor Ghosh is head Resilient Infrastructure Division, National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India. Dr. Ghosh is a civil engineer graduate and also a PhD from IIT Kanpur and Doctor of Engineering from Japan, and has been serving NIDM MHA Government of India since 2006 and worked in the area of earthquake geotechnology, reinforced earth, seismic microzonation, ground improvement technique, geosynthetic and bioengineering measures for sustainable development. He had published more than 135 papers in reputed journal and conference proceeding. There are much more to say about him, but I would now request Professor Ghosh to kindly give the keynote address. Over to you, sir. Thank you. ये तो खुशी की बात है. मुझे लगता है कहीं से प्रॉम्प्ट आया था कि हिंदी में बोलें. That is better. ठीक है. तो मैं लेकिन हिंदी भाषी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूँ. तो ऐसे है, पहले तो ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्या हम इस ऑनलाइन के जरिए द काइंड ऑफ मतलब innovation that has taken place, which you are going to talk about in this session, which is also an unique. ये भी बहुत अच्छा लगता है कि Honorable Vice Chancellor of a university is going to address separately on the model and on the issues, especially from the computer science के जो आजकल पूरा चारी तरफ दुनिया में जो है इंफॉर्मेशन डेटा को लेकर के, डेटा इज ऑयल, डेटा इज एवरीथिंग. एंड कोविड के चलते जो है हमने जिस तरह से कोविड से फाइट किया है, विलवारा मॉडल दैट आपने एस्टेब्लिश किया है, और इसके चलते पूरा कंट्री में अब ऑलमोस्ट वी आर नाउ मास्कलेस, बट the lesson that we have learned, it will remain for us. और ये भी आजकल हम जानते हैं the kind of momentum in the last 2 years, especially ये जैसे more than 200 student के साथ student and all enthusiast in disaster management जो हम interact कर रहे हैं. मैं यहाँ पे बैठ करके Zone for Solution के हमारे तरुण जी है. तरुण जी हमेशा तरुण है and इनके बातों में and everything, and also Tanushree. Tarun and Tanushree, they are always working in this area, especially disaster management plan and management. And हमारे जो इसमें lineup of speakers है जो next 2 दिन के लिए भी, मुझे लगता है उसमें मेरा भी कुछ part है. तनुश्री, ओके. तो आप तो उसमें मैं चाहता हूँ क्या जैसे राजस्थान जैसे है, तो राजस्थान में रहने के लिए किस तरह वातावरण में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, और आपका जो व्हाट इज द लाइफस्टाइल and it is itself that is a learning for us. And in that case आजकल मॉडर्न तरीके से, जैसे हम मॉडर्न मतलब स्मार्टफोन है, सैटेलाइट हम भेज रहे हैं, स्पेस एक्स है, और ड्रोन का जमाना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जमाना है. इतना कुछ होते हुए भी जो अपने आसपास एरिया में the people that living over there with less than 30 centimeter rainfall,
but still maintaining greenery and so many wonderful lakes that which are being maintained. तो मुझे लगता है ये 3 दिन का जो ये चर्चा होंगे इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक जो चल पड़ी है पिछले करीब 15 साल 17 साल से, स्पेशली आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और उसमें परिसंख्यान ये बताते हैं ऑलमोस्ट 690 डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बन चुका है इन पेपर एज वेल एज इन स्पिरिट, क्योंकि द काइंड ऑफ एक्शन जैसे विलवारा मॉडल जैसे एक्शन जो होता है उसके पहले जो ग्राउंड वर्क है वो जैसे संगम यूनिवर्सिटी ने इसमें लीडिंग रोल लिया है, एंड उसके लिए रियली वी आर थैंकफुल टू यू एंड योर लीडरशिप. एंड मोर ओवर पूरा कंट्री में नाउ some of the states they are looking forward, even district level पे भी उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है उसका रिव्यू का समय आया है, रिव्यू करने का एवरी टाइम व्हाटएवर न्यू एस्पेक्ट्स, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी इन द telephone or in the internet or in the space, but on the ground also. The kind of ground means वहाँ पे रहने के लिए what kind of house or infrastructure जैसे बनाना चाहिए. और आजकल जो है सिटी एरियाज में जैसे स्काई वॉक क्या ग्रीन बिल्डिंग का एक अलग तरीके से जो ग्रीन रेटिंग स्टार रेटिंग कैसे किया जाता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये नहीं है केवल बिल्डिंग है, क्या कंक्रीट है, क्या सैंडस्टोन से कवर किया हुआ, जैसे राजस्थान के वातावरण के हिसाब से जो सैंडस्टोन व्हिच इज वेरी फेमस, और उसमें सैंडस्टॉर्म से बचने के लिए व्हाटएवर कवरेज इज बीइंग और व्हाटएवर मेजर्स आर बीइंग टेकन, व्हाट आर द internal ambience created, external ambience is also created, what are the measures are being taken, would be taken to make life possible with less amount of energy consumption, consumptions in terms of material, in terms of process. तो इन चीजों के बारे में मैं थोड़ा आलोकपात करेंगे tomorrow. In that case, जैसे आजकल सिंगापुर अगर मैं कोरिया में बहुत जगह जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 20 स्टोरी 30 स्टोरी बिल्डिंग, इवन जहां दिल्ली में जैसे हम जहां रह रहे हैं, एवरी हाउस होल्ड whether in the first floor, second floor, third floor, multi floor, we have got a culture to nurture some of the kind of special varieties of plants, and you can see मेरे कमरे में भी कुछ plants रखे हुए हैं. तो अब इस प्लांट में अब यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं है ये प्लांट्स ऐसे रखे हुए, इसमें कुछ सिलेक्ट प्लांट है, और इसमें we have to bring in the university not everything, just let us toy with disaster management definition, HRVCA and other thing, but just selection of the plant, indoor plants, ye what kind of replenishment that it is doing. It is taking only carbon dioxide, or there are certain varieties of plant that which are being measured, are being evaluated, analyzed, especially in the agriculture system में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेजर नहीं कर सकते हैं, जो कंप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते, वो साइंस नहीं होता है. क्या वो हम अप्लाइड साइंस के हिसाब से नहीं मानते हैं. तो व्हाट आर दैट स्पेशल वैरायटी ऑफ प्लांट्स और ग्रास और बायोमास that which are efficient enough to take care of the kind of मतलब उसमें जैसे राजस्थान में जैसे जो वातावरण है, हाई टेम्परेचर एंड वेरी ड्राई कंडीशन में भी वो सब वो मतलब दे कैन सर्वाइव. उसके लिए जैसे एरिड लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है. इंस्टीट्यूट के साथ यूनिवर्सिटी और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से क्या कनेक्शंस है, वो अपने इंस्टीट्यूट में किस तरह से ग्रीनरी क्रिएट किया है. जैसे मुझे 2010 में जब ले क्लाउड बस्ट हुआ था, तो NIDM के तरफ से हम वहाँ पे मतलब डिजास्टर क्या हुआ है
उसका डॉक्यूमेंट करने गया था। तो वहां पे डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का DRDO का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च। उसमें देखा उनके जो रिसर्च कंपाउंड में ऐसा कोई मतलब ग्रीनरी नहीं है जो कि even we cannot afford to have, but they have made those kind of greenery, fruits and various kinds of plants. They have been making, it was really in the Leh area mein, you know, it is again another extreme environment. So usme when researchers are able to create such kind of say output, especially the kind of greenery that they have created, they are able to nurture. तो कल हम चर्चा इस विषय में करेंगे, what are the nature's omnious gift given to mankind. अगर हम पौराणिक उसमें अगर जाएंगे, पौराणिक उसमें हनुमान जी आए हुए थे हिमाचल में कहीं वो जो संजीवनी लेने के लिए। So we are संजीवनी लेकर के फिर वो वहां पे गए और जाकर के लक्ष्मण जी को बचाया। तो let us not take it that इस अर्थ में जो हम इतना सालों से है, इतना हजारों सालों से, so we have gone to the history of mankind maybe 60, 70 और even DNA का जो DNA प्रिंटिंग अगर करके 2,70,000 तक हमने देखा। हिमालय का कितना 10 मिलियन ईयर्स तक हमने हिस्ट्री इसका देखा, हिस्ट्री जियोग्राफी का इसका डेवलपमेंट देखा है। So when we are looking at the origin of the universe using James telescope in one hand, looking at that how billion light years away what universe was, on the other hand in the Switzerland में जो CERN laboratory में कैसे मतलब collider use करके हम इसका on nanosecond after the Big Bang what happened, when we are creating that kind of things. And even this time teleportation के नोबेल प्राइज दिया जा रहा है जिन लोगों ने 3 साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में रह करके साइंटिस्ट जब एक साथ काम कर रहे हैं, तो काम करके उनको 40 साल रिसर्च करने के बाद उनको रिकॉग्निशन मिला है। यस, टेलीपोर्टेशन इज समथिंग लाइक दैट। और उसको जब हम जनमानस में अपने हिसाब से जब उसको देखेंगे, आजकल जैसे 10,000 का 5,000 का प्रिंटर भी हमें जो है कहीं से भी प्रिंट दे, वाईफाई उसमें डाल दिया, कहीं से भी प्रिंट करके 3D प्रिंटिंग भी करते हैं, 2D प्रिंटिंग तो होता ही है। सो थिंग इज वी हैव टू सी दैट भिलवाड़ा क्या राजस्थान जैसे एरिया में what are the right varieties of ambience that we can create where it will be energy efficient and it will be acceptable and it can make the living more easier and more healthier, so that COVID से हमें जो शिक्षा मिली है that now we do not have the mask and other things, but the kind of research that we need, especially of course the kind of research that we have to do is to be part and parcel of our disaster management curricula. And हम चाहते हैं कि disaster management में जो भी शिक्षा हमें लेना है, जैसे पिछले कई सालों से now we can see more than 200 university, like गरिमा जी ने mention किया, हमारे जो inter university जो network है, 200 university are there. At the same time, when I was in USA for some time in an official tour, 1995 तक, 1995 से पहले वहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा था। बट व्हेन फेमा, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एसोसिएशन में जब उन्होंने 1-1.5 साल का प्रोग्राम लिया है, क्या नहीं, we have to transmit this thing to the educational institution, हमें ये education institution की तरफ जाना है। तो तब उन्होंने उनके हिसाब से जब हम 2008 में विजिट किया था, कह रहे 1 साल के अंदर जब हमने इस तरह से प्रचार करना शुरू किया है, जो आज हमें लगता है कोविड प्लस NDMA, NIDM and
UGC, University Grants Commission, and with center's directives. अब जो है many universities they have created centers, and center करने के बाद उसमें बहुत सारे research activity होने लगे, क्योंकि बिना research का जो है we cannot establish anything, we cannot make our life more healthier, wealthier and happier. So thank you very much. बाकी मुझे लगता है कल थोड़ा मैं कुछ फोटोग्राफ के साथ कुछ प्रूफ के साथ आपके सामने उपस्थापना करेंगे. धन्यवाद. सिंह साहब, राजेंद्र सिंह साहब, नमस्ते. Again, thank you for your presence, and always it is encouraging. Thank you, चंदन जी, thank you. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो चंदन घोष जी ने कहा है कि राजस्थान के उसमें, तो मैं अगर आपको जाते जाते 2 शेर सुना रहा हूँ, तो देखिए, यूं ही भरा नहीं है पानी शहर में, यूं ही भरा नहीं है पानी शहर में, हमने भी भरे हैं कई नाले शहर में, इमारतें बनाकर रोकी है सांसें जमीन की, दफन किया है कई तालाबों को शहर में. तो जोर इस पे होना चाहिए कि जो नाले हैं उनके आसपास बिल्डिंगें ना बने, और जो तालाब है उसको भरा ना जाए, बल्कि उनको पानी के लिए राजस्थान जैसे शहर में अगर पानी की व्यवस्था पूरी नहीं होगी तो आने वाले टाइम में ये ज्यादा हीट वेव के टाइम पे, नाउ वी आर डूइंग अ प्रोग्राम ऑन हीट वेव के टाइम पे अगर पानी नहीं होगा तो दिस सिचुएशन विल बिकम एडवर्स. तो कोशिश करें कि जो हमारे तरफ जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उसको वैसे ही बना कर रखें, उस पर इंक्रोचमेंट करने की जो है रिक्वायरमेंट है. थैंक यू. थैंक यू. एक्सेलेंट. थैंक यू सर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग ड्रेनेज मैनेजमेंट और फ्लड रिस्क, स्पेशली अर्बन फ्लड की बात करते हैं, जिसमें ड्रेनेज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आ रहा है. टाइम एंड अगेन हम लोग देख रहे हैं, जैसे बेंगलुरु में जो अभी रिसेंटली फ्लडिंग हुआ, और अब जाके इलीगल इंक्रोचमेंट वहां हटा रही है म्युनिसिपल गवर्नमेंट. तो ये इम्पोर्टेंट है. शेयर के माध्यम से सर ने बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे दिया है. विद दिस हम लोग अब इस इनॉग्रेल सेशन के अंत में आ गए हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर नकुल कुमार तरुण, डायरेक्टर जूनफुल सॉल्यूशंस, को फाइनल वोट ऑफ थैंक्स दें. और नकुल जी is best known as a founder of Jodhpur Solution, and earlier he has worked with organizations like NDRF, UNDP, and SARC disaster management. Nakul ji, over to you. मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं. आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम का स्टार्ट किया, और मैं देख रहा हूं कि एक पॉइंट पे कोई 250 लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो राजेंद्र साहब बात कर रहे थे. थोड़ा चंदन साहब ने ठीक कहा, वो पीछे से प्रॉम्प्ट आ रहा था कि सर क्या हिंदी में बात हो सकती है. तो अब मैं सबको इनवाइट करता हूं, आप सब लोग सुनिए, मैं केवल हिंदी ही बोलूंगा. तो ये मैं सबसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं राजेंद्र साहब का धन्यवाद करता हूं. राजेंद्र साहब कभी भी मुझे निराश नहीं करते, टाइम निकाल करके, और जाते हैं हम लोगों के रिक्वेस्ट पे. और मैं हमेशा सर को यही कहता हूं, सर आप आए, आपकी ब्लेसिंग्स की बड़ी जरूरत है. आई ऑलवेज ग्रेस अस. थैंक यू सर, थैंक यू. मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, मे गॉड ब्लेस यू. मैं प्रोफेसर चंदन घोष साहब का धन्यवाद करता हूं. मुझे पता है घोष साहब अब बिल्कुल प्रोफेसर के उस लेवल पे आ गए हैं, अब जहां जाकर के वो अब बिल्कुल अब एक तो प्रोफेसर होता है जो पढ़ाने में, वो थिंकर हो गए हैं. उसके बाद तो थैंक यू प्रोफेसर साहब. मैं आपको बहुत दिन से, हम दोनों साथ बिल्डिंग में काम किया है हम लोगों ने, आपके साथ बहुत दिन से मेरा वर्किंग रिलेशन रहा है. थैंक यू सर. मैं डॉक्टर करुणेश जी का धन्यवाद करता हूं. आपने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया. एक्चुअली अदरवाइज हम सब लोग नहीं मिल पाते एक प्लेटफॉर्म पे. आपके वजह से ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल पाया है कि हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बात कर रहे हैं. और आपने हमें भीलवाड़ा मॉडल बताया. आगे हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ और जो
अभी सर कह रहे थे और तनुश्री कह रही थी कि कैसे डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जा सकता है और कैसे आपके जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं एनसीसी वगैरह को जो हैंडल करते हैं उनको कैसे ट्रेन किया जा सकता है, कैसे उनको ज़्यादा डीआरआर के बारे में बताया जा सकता है। हम लोग उस पर काम करेंगे। थैंक यू आपका करुणेश साहब। मैं डॉक्टर गरिमा अग्रवाल का धन्यवाद करता हूं। वो इस प्रोग्राम की पिवोट है जिसके इर्द गिर्द ये प्लान चलता है। पहला वो कहते हैं ना, पहला फाइल वहीं से स्टार्ट होता है। तो थैंक यू डॉक्टर गरिमा अग्रवाल, आपने इस प्रोग्राम को चलाया। साथ में उनके दो लुटियंट भी हैं, एक श्रेष्ठ द्विवेदी हैं और एक का ये लोग बिना इनके सहयोग के कुछ हो नहीं सकता। Both are the very young and bright chap. Thank you both of you. और एंड में मैं डॉक्टर तनुश्री वर्मा का धन्यवाद करता हूं, जो आप उनका पहला लाइन आप इस प्रोग्राम में आपने सुना होगा, वेलकम टू ऑल, और आखिरी तक आपको उन्हीं को सुनना है। बहुत ही बढ़िया वो बात करती हैं, वेरी बड़ा सिंसियरली वो डिसास्टर मैनेजमेंट में काम करती हैं। थैंक यू डॉक्टर तनुश्री वर्मा। आप सब लोगों को सुन करके, बिकॉज मैं कोई डिसास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, एक वैसा वाला प्रैक्टिशनर जो कहीं बाजार में अपना क्लिनिक खोल के बैठा होता है डॉक्टर, और उसके पास रोज का इशू लेकर के कि सर मेरा पेट दर्द हो गया, मेरा सर दर्द हो गया। तो वैसे ही मैं द्वारका मोड़ में मेरा ऑफिस है, आप देख रहे होंगे पीछे 10 पॉइंट एजेंडा, ये पीएम साहब ने बोला था, लेकिन हम लोगों ने इसका लोगो क्रिएट किया है और अब यही लोगो अराउंड द ग्लोब जो है पीएम 10 पॉइंट एजेंडा का यूज होता है। हमारी टीम ने इसको किया और हम लोगों ने इसको पीएमओ भेजा था। तो मैं सब उस टीम को भी थैंक यू बोलता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस हिसाब से इस प्रोग्राम को कंसीव किया गया, कि ये बात सही है कि अभी काफी लोगों को ये समझ ही नहीं है कि डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से पूरे ऑडियंस को और राजेंद्र साहब को, चंद्र, आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान इज द चीपेस्ट, सबसे सस्ता और सबसे बेहतर तरीका है डिसास्टर मैनेजमेंट की साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। जो डीआरआर की साइकिल है उसको स्टार्ट करने के लिए डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान सबसे सस्ता और सबसे बेहतर तरीका है। उदाहरण के लिए क्या होता है कि जहां कहीं भी आजकल हम लोग सब काम करते हैं, सब अपने अपने सेल में काम कर रहे होते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि हमारे बगल में क्या हजार्ड है। जहां हम बैठे हमें नहीं पता मेरे दीवार के पीछे क्या हजार्ड है, लेकिन जब वो हजार्ड जो है जिस दिन भी रिस्क क्रिएट करेगा तो मुझे साथ में ले जाएगा। तो जब डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनता है तो जो हमारी टीम, इतनी बड़ी टीम है, वो हम लोग क्या करती है, हमारी टीम आरवीएस करती है, रैपिड विजुअल असेसमेंट करती है, इन एंड अराउंड। तो बाहर को भी, अंदर का और बाहर का भी रिस्क पता करके लाती है कि देखिए आपके आसपास ये हजार्ड एग्जिस्ट करता है, तो आपको हजार्ड पता लग जाता है। जब एक बार बीमारी पता लग जाए तो इलाज भी पता लग जाएगा। तो मेरा भी कल एक लेक्चर है, उस पे उस समय हम लोग बात करेंगे। बाकी डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान कैसे बनता है, कौन बनाता है, कहाँ सबमिट होता है, क्यों सबमिट होता है, तो इस मुद्दे पे हम लोग कल और बात करेंगे इसको डिटेल में। अभी मैं आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं और पार्टिसिपेंट्स मैं आप लोग सभी लोगों को इंकरेज करूंगा कि ठीक कहा आपके वीसी साहब ने कि आप पेन और कॉपी निकाल करके बैठिए, क्योंकि सारे टर्मिनोलॉजी आपके लिए नए होंगे, आप इसको नोट करें। और मैं आपको इनकरेज करता हूं कि हमारे जो भी प्रेजेंटर हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनसे आप सवाल पूछिए, कम से कम 2, 4, 10 सवाल तो हर कोई पूछिए, क्योंकि दोनों ही एक्सपर्ट है। गरिमा अग्रवाल को डिसास्टर मैनेजमेंट में जितना, क्योंकि दोबारा तो आपको मिलना नहीं है, अभी मिल रही है, पूछ लीजिए आप, जितना ज्यादा पूछेंगे उतना फायदा होगा आपको। तो फिर से मैं आपको थैंक यू एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट तनुश्री, थैंक यू। Thank you, Nakulji. With this, now we are entering to a technical session of 3 days online training program, and we have Dr. Garima Agrawal once again as a resource person to discuss the disaster management in India concept and importance of DM plan education
institution, since we are discussing about the educational institution. So this initial introductory session is important to understand the concept of disaster management and what are the various aspects of DM plan in an educational institution. Over to you, Dr. Garima. You are on mute, Dr. Garima. Yeah, thank you very much, Tanushri. Just give me a minute. Just let me start this PowerPoint presentation and how to share it. This will be followed by technical session 2, which will be taken by BC sir, Professor Karunesh Saxena sir, on application of innovative technology for disaster management. Share कैसे करूं? Share कैसे? Share screen option is there. Sharing option आपको right से शेयर नहीं हो पा रहा है तनुश्री, डिसेबल आ रहा है. Okay. This रणबीर गरिमा को एक्सेस कीजिए उसको. देखिए आपको मिल गया होगा गरिमा अब. डॉक्टर करुणेश को भी एक्सेस दे दीजिए इन एडवांस. ओके, तो ये विजिबल हो पा रहा है? हाँ, टेक इट ऑन प्रेजेंटेशन मोड. ये अभी हाँ ठीक है, आगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज क्योंकि ये पहला सेशन है, इट वाज सपोज्ड टू बी द सेकंड सेशन आई थिंक, बट अब ये पहला सेशन है तो इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंडिया में कैसे हो रहा है और किस तरह से इवॉल्व हुआ और इसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. ऑल्दो इसका जो डिटेल्ड hazard, risk, vulnerability and conceptual framework of disaster management is supposed to be taken by Tanushri maybe on 3rd day now, right? Yes. हाँ, तो ये थोड़ा इसलिए I don't know how it will go in flow. तो पहले ये आपको जानना चाहिए कि इंडिया जो है वो शुरू से ही कितने सारे डिजास्टर्स के साथ वल्नरेबल है. ये हमें पता ही है कि फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स जो है वो होते रहते हैं. और जो इवोल्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है वो ओवर द टाइम पीरियड जो है वो शुरू हुआ है. और ओवर द टाइम पीरियड वो कैसे हुआ है कि 2000 इंडिया में जैसे लगभग आप कह सकते हैं कि 2 डिकेड्स के बाद से इसमें अब ये चेंजेस जो है आने शुरू हो गए हैं. तो जैसे सुपर साइक्लोन इन उड़ीसा इन अक्टूबर 99, द भुज अर्थक्वेक हैपेंड इन 2001 इन गुजरात. व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? Audience, please do not do that on the screen. Please stop that. It doesn't look अच्छा नहीं लगता है. आप लोग इसको देखिए और स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी. उसके बाद सुनामी 2004 में आया और उसके बाद से ये जो पैराडाइम शिफ्ट अप्रोच है डिजास्टर मैनेजमेंट की, इसने जन्म लिया. एक्चुअली इससे पहले जो हमारी अप्रोच थी वो ज्यादा रिलीफ सेंट्रिक थी, रेस्पॉन्स सेंट्रिक थी, व्हिच हैज इवॉल्व्ड ओवर द टाइम पीरियड एज रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस रिलेटेड अप्रोच. तो बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट कि व्हाट इज अ डिजास्टर. डिजास्टर हम किसी भी एक ऐसे इंसिडेंट को कहते हैं जो कि हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को जो है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है. चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, उस मतलब उसका जो एनॉर्मस जो लॉस होता है लाइव्स का, प्रॉपर्टी का और लाइवलीहुड का, उसको वो बढ़ा देता है. और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक एक्सटर्नल एड यानी कि बाहर से भी हमें उसमें मदद लेने की जरूरत पड़ती है, तब जाके हम उस सिचुएशन से कोप अप कर पाते हैं. और ये भूकंप और साइक्लोन और जैसी जो बड़ी आपदाएं हैं, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो इसमें गुजरात का अर्थक्वेक 2001 सभी के दिमाग में ये काफी ताजा है. तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि कितना इसमें एक्सटर्नल एड की जरूरत पड़ी थी उस सिचुएशन को वापस हमें नॉर्मलसी में लाने के लिए. और बहुत सारा जो डेवलपमेंट गेन है हमारा वो इससे डिस्ट्रक्ट हो जाता है और कई साल लग जाते हैं डिजास्टर से के बाद अपनी सिचुएशन को वापस उसी सिचुएशन में वापस आने के लिए, यानी कि अपने डेवलपमेंट गेन्स को किस तरीके से वापस सेम
सिचुएशन में लाया जाए, उसमें बहुत साल लग जाते हैं। जो हमने एक घर बनाया था, अगर वो किसी आपदा की वजह से टूट जाता है या वो है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, या उसके हमें उठ के वहां से हटके हमें कहीं और जाना होता है बिकॉज ऑफ अ डिजास्टर प्रोन एरिया, तो उस सिचुएशन से हमारा जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है वो जुड़ी हुई है, और वो उससे बिल्कुल इम्पैक्ट हो जाती है डायरेक्टली। तो इसमें हम एक ये बात समझेंगे कि डिजास्टर क्या होता है, लेकिन ये किस चीज से बनता है। एक इसमें हजार्ड करके एक हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसका मतलब हजार्ड क्या है? हजार्ड कोई भी एक पोटेंशियलिटी ऑफ अ फिजिकल इवेंट है दैट मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। मीन्स कि वह पोटेंशियल इवेंट है, पर कोई भी हजार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि वह एक डिजास्टर भी होगा। वर्नेबिलिटी जो है वो एक फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एरिया में ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। वर्नेबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है और एनवायरमेंटल भी हो सकती है। और एक्सपोजर उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं टुवर्ड्स द वेरिंग डिग्री ऑफ डिजास्टर्स, तो उसको हम एक्सपोजर कहते हैं। और कैपेसिटीज जो है वो है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी रिसोर्सेज क्या है, और हमारी उस चीज को लेकर नॉलेज और अवेयरनेस कितनी है, इससे हमारा कैपेसिटी बनता है। और इन्हीं सबसे हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वह कैलकुलेट होता है कि हमारा डिजास्टर रिस्क कैलकुलेट होता है कि कितना हम डिजास्टर प्रोन एरिया में है और कितना हम कम डिजास्टर प्रोन एरिया में है, यह एरिया कितना डिजास्टर पर्टिकुलर डिजास्टर के रिस्क में है और कितना कम है। तो ये एक बेसिक जानकारी है। इसके बारे में डिटेल बातें जो है तनुश्री अपने लेक्चर में करेंगी, बट एक क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर हो गया तो मैं सोचा कि एक छोटा सा इसमें आपको बताया जाए। एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है ये बेसिकली इवॉल्व हुआ है, और मैं जैसे पहले कहना चाह रही थी कि पिछले 20 सालों में ही इसमें सबसे ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है। और इससे पहले एक रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच थी, और ओवर द टाइम पीरियड ये जाना गया कि इसको इवॉल्व करने की जरूरत है और रिस्क रिडक्शन की ज्यादा जरूरत है। रिस्क और रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच से हमें इसे चेंज करना है। और इसका जो है ये एक्चुअली कंसर्न जो है ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के कंसर्न्स ग्लोबल मूवमेंट पे बेसिकली से बहुत ज्यादा इसको एंकरेजमेंट मिली है। बेसिकली इसको हम आगे भी देखेंगे कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती रही है, और उससे अलग निकल के जो 90s में हमने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को अलग कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्चुअली पाने के लिए उसको बेसिकली टू encourage sustainable development, disaster risk reduction is an important aspect, and because of that we have to understand that how the risk can be reduced. And for reducing the risk, we had a global movement was started, and there had been 5 actually such strategies or UN agencies have been working about it, and they have made many action plans for that. So ये one by one हम एक बार देख लेंगे कि कैसे UN डिजास्टर रिलीफ ऑफिस जो है वो 1971 में फॉर्म हुआ था, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1989 ये रियलाइज किया गया कि एक इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन की जरूरत है, और उसमें हम स्पेसिफिकली रिस्क रिडक्शन की बात करें, जिससे कि सिर्फ रेस्पॉन्स सेंट्रिक होने से ये बात नहीं बनेगी, हमें धीरे धीरे रिस्क रिडक्शन की तरफ जाना होगा। इसी को करते हुए 1994 में यूएन ने एक योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन एक कॉन्फ्रेंस किया था। ये सब इंटरनेशनल यूएन के जो है ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हैं जो बनाए गए थे, और इतने सभी कंट्रीज ने जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, और ये कोशिश की गई कि इसके अंदर जो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिन एक्शन पॉइंट्स को, उन्हें हम अपने कंसर्न स्टेट्स में और अपने कंट्रीज में बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करें। और इंडिया हैज बीन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क ऑफ एट ग्लोबल लेवल। सो उसके बाद 99 में एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी गई, जिसे UNISDR के नाम से जाना गया, और वहां से इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनना शुरू हुआ कि कैसे एक्शन प्लान एक बनाना चाहिए, और उसमें कुछ एरियाज कंसर्न आइडेंटिफाई किए गए इन अलोंग विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, और काफी थिंक टैंक इसमें लगे रहे, और इवॉल्व किया गया कि क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। और 2005 में
ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक एक्शन प्लान जो है वो बना, और उसका 10 साल का उसका फ्रेमवर्क हुआ, और उसमें काफी चीजें हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आया, जो कि 2015 से 2030 का है। ये थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिडक्शन में हुआ, जो कि सेंडाई में हुई थी। और इसी के साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इंडिया में, ये इवॉल्व हुआ। जैसे 1999 में जब इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन आया था, तो हाई पावर्ड कमिटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एक कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और उन्होंने अब एक एक्शन प्लान इसमें डेवलप किया था। उसके बाद एक गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया, जो कि भुज अर्थक्वेक के साथ आया गया, जब ये थोड़ा इस तरह से गवर्नमेंट के अंदर भी एक अवेयरनेस आ गया था कि किस तरह हमें गुजरात स्टेट हमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जरूरत होगी और एक फॉर्मल सेटअप की जरूरत होगी डिजास्टर मैनेजमेंट को आगे बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, इसकी स्ट्रैटेजी को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए। इसी तरह से 2004 में इंडियन ओशन सुनामी के साथ साथ बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी आया, और हमारा देश का पूरा जो ओवर आर्किंग एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, वो भी हमारा नोटिफाई हो गया था। और 2009 में नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट आया, जो कि बिल्कुल पोस्ट HFA आप देखेंगे ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के बाद ही ये सब जो है हमारे एवोल्यूशन हुए हैं। और उसके बाद 2016 में जैसे प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा हमने एक बनाया है, जिसके ऊपर हम लोग काफी सारी एक्टिविटीज अब करते हैं। और 2019 में 16 में ही एक्चुअली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आ गया था, और 19 में ये बेसिकली उसका रिवीजन है। तो पहला जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, जो कि 1990 से 99 तक ये चला, ये एक्चुअली 11 दिसंबर 1987 में जो है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने 1990s को इंटरनेशनल डिकेड का नाम दिया था। इसका मेन जो गोल था, इट वाज टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ ईच कंट्री टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ इनिशिएटिव व्हिच वाज टेकन फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर। बिफोर दैट वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, but not much thinking was taken into that how we can reduce the impact of disaster. So आगे हम चलेंगे तो ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जो कि उसके साथ ही 2005 से 15 में आया, और यहाँ पे हमें ये इस बात को ज्यादा एक तरह से कहा गया कि किस तरह हम जो है डिजास्टर लॉसेस को किस तरह से रिड्यूस करने चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाए। एंड टू इंश्योर दैट DRR इज अ नेशनल एंड अ लोकल प्रायोरिटी विद अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई, assess and monitor the disaster risks and enhance the early warning system. And we need to encourage the knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience to all the levels. So, and also how we can reduce the underlying risk factors and how we should strengthen the disaster preparedness for effective response. तो इसके ये 5 important goals थे। और मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की पहली बार इसमें हमने HFA का जो फ्रेमवर्क है उसमें बात की गई थी कि हमें हर सेक्टर में, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे लाइवलीहुड हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वी शुड मेन स्ट्रीम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनटू द सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड ऑल द डेवलपमेंट सेक्टर मस्ट इम्बाइब द रिस्क रिडक्शन मेजर्स। क्योंकि और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा गया कि वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन द क्रिटिकल पब्लिक फैसिलिटीज एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली स्कूल्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, वाटर एंड पावर प्लांट्स, communications and transport lifelines, disaster and warning management centers, and culturally important lands and structures through proper design, retrofitting and rebuilding in order to render them adequately resilient to hazards. Enactment of Disaster Management Act happened in 2005, and this was for the first time when a full-fledged definition of disaster management was introduced, and which was consisting of all, continuous and integrated process of planning, organizing, and coordinating and implementing measures which are necessary for expediting prevention measures, mitigation measures, capacity building, preparedness, and again evaluation, rescue, relief, and rehabilitation and reconstruction. इसके दौरान
यहीं से आप कह सकते हैं 2005 में ये पैराडाइम शिफ्ट एक्चुअली इट टुक प्लेस एंड द अप्रोच वाज मोर प्रोएक्टिव, which is more preventive mitigation approach than the relief centric syndrome. So it is more holistic and integrated approach, and it emphasizes on conserving the development gains as it also minimizes loss of lives, livelihood, and property. So in Disaster Management Act, our act has 79 sections in 11 chapters. And as defined in disaster management, it is a typical continuum comprising of 6 elements, as I just told you about mitigation, prevention, preparedness. These are 3 activities which we need to actually take place in pre-disaster phase, and response, rehabilitation, and reconstruction in post-disaster phase. So it provides detailed legal and institutional mechanism for development and monitoring of disaster management plans at various administrative level. It talks about how to ensure disaster mitigation and prevention measures through various departments and sectors. It talks about mainstreaming of multi-sectoral disaster management concerns into development process. And it also talks about constitution of response and mitigation funds at national, state, and district level. It also introduces penalties and obstructions, false claims, and misappropriation. And this was for the first time during pandemic, actually, when these penalties and all were imposed by, under the DM Act when it was. So you can say, as per the legal mandate, we all the departments and sectors are supposed to create their own disaster management plan. The section 40 of Disaster Management Act says that every department of the state under the section 32, every office of the Government of India and of the state government shall prepare its disaster management plan. And every department of the state government, while preparing the plan under this section, shall make provision for financing the activities specified therein. So it is important, and it is a legal mandate to have a DM plan for each and every institution working under state government or Government of India. As per the Disaster Management Act, we have 3-tier disaster management system. Okay, at national level, we have National Disaster Management Authority and National Institute for Disaster Management. We have National Disaster Response Force and a National Executive Committee at national level. So we will talk about these institutions one by one. At state level, we have State Disaster Management Authority and State Executive Committee. We can also have SIDM and SDRF, but they are in many states. I mean, in Rajasthan, SDRF is there. But SIDM is not there. So not all the states have these two, but they have SDMAs and SEC. And district level, you have District Disaster Management Authorities. So this is the detailed structure of disaster management in India, which talks about the same thing. And here you can see that how our National Executive Committee actually helps us to coordinate with NDMA and SDMAs. And how SEC and Advisory Committee helps to coordinate between SDMAs and District Disaster Management Authorities. So I spoke about national policy on disaster management. It came after the 2005 Disaster Management Act in 2009. And its vision is to build a safe and disaster resilient India by developing a holistic, proactive, multi-disaster oriented and technology driven strategy through a culture of prevention, mitigation, preparedness, and response. So the policy covers all the details of how institutional and legal arrangements should be, what should be the financial arrangements, what kind of activities should be there in prevention, mitigation, preparedness. And one of the important aspects it talks about is mainstreaming disaster management into the development planning process. So here we are talking about reducing the risk actually by mainstreaming DRR measures into development planning. That means that if we construct a school, it should not be only a school, but a disaster resilient school, not only in terms of physical, that how strong it should be physically, but also socially, how it is actually technically also how it is located, and also how it is supporting the response framework of the district or of the ward, or because after any disaster,
these educational institutes have important role to play as a relief shelter, as a temporary shelter. Sometimes even for emergency operations, you need such kind of strong buildings which are disaster resilient and which could be used for that purpose. So that's why it is important. Ministry of Home Affairs, we have a disaster management division in Ministry of Home Affairs, which actually overall coordinate and monitor with the central and state level governments on day-to-day basis. Home Minister and Home Secretary reviews the progress on regular basis, and MHA actually provide funds to the national and state level agencies for disaster risk mitigation, preparedness and response through their regular budget and centrally sponsored schemes. It runs a National Emergency Response Center also, and they also develop daily situation reports on various, feedback provided by states and concerned ministries regarding any disaster which has happened. Then, as I spoke about National Disaster Management Authority, which is headed by Honorable Prime Minister of India, and we can have up to 9 members. At present, we have 4 members, 3 members and 1 member secretary, but we can have up to 9 members. Its main role is to lay down policies, plans, and guidelines for disaster management, and it recommends minimum standards for relief provided to the persons affected by disaster. It also approves national plan and plans prepared by the central ministries and departments. Similarly, as we spoke about National Executive Committee, it is it assists NDMA in performance of their function, and Home Secretary is the chairman of NEC. This is National Institute of Disaster Management, and its vision is to create a disaster resilient India by building the capacity of all the levels of disaster prevention and preparedness. And under the DM Act, NIDM is assigned the nodal responsibilities for human resource development, capacity building, training, research, documentation, and policy advocacy. NDRF is a specialized force which is constituted for the purpose of specialist response to a threatening disaster situation or disaster under the DM Act. And the NDRF is responsible for managing disasters in India, in the states. And the MHA is a nodal ministry for them. They have 16 battalions organized and manned by person on deputation from the paramilitary forces of India. And the total strength of each battalion is like 1,149 persons. And each battalion has 18 self-contained specialist search and rescue teams of 45 personnel, and each including engineers, technical experts, electricians, dogs, squads, and medical paramedical staff. So these battalions are extremely capable of actually conducting search and rescue in any situation. Even for NBC disasters and nuclear, radiological, biological disasters also, we have 4 such battalions. You can see how they are strategically located on the map of India. And Rajasthan has its own SDRF also, although they can call the battalions from the nearby stations. Similarly, at the state level, we have Chief Minister who heads the State Disaster Management Authority, and up to 8 members can be nominated by Chief Minister, and 1 member can be designated as a Vice Chairperson of SDMA by the Chief Minister. And then there is a State Executive Committee for whom the Chief Secretary is the chairperson. You can also have advisory committees for advising the SDMAs and NDMA and district DM and disaster management authorities. So DM authority has important role, extremely important role, I should say, at the ground level. It is headed by a district magistrate and shall consist of members not exceeding 7 as prescribed by the state government. And DDMA shall act as a district planning, coordinating and implementing body of disaster management. For example, if we are preparing a development a college disaster management plan, it has to be approved by the concerned district disaster management authority. So it is also have power to examine the construction in any area in the district and to enforce safety standards, and also to arrange for relief measures and response to a disaster at district level. Similarly, we were talking about the Sustainable Development Goal. Actually, in 2015, it was a landmark year for the global movement, you can say, and three global
frameworks were signed in 2015. One of them is Sustainable Development Goals, and others are like Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, and third is the COP26, and now 27 I think is going to happen. So these three frameworks are there, and all the three frameworks are interrelated. And actually COP26 and Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, they are actually supporting Sustainable Development Goals only. So the major goal is sustainable development, and other two are basically helping them to achieve a better and sustainable future. So Sustainable Development Goals have 17 goals, and it has basically a framework which actually try to help all the countries to achieve economic growth, social growth, and overall development, and safety and security, you can say. And about 193 nations have joined UN General Assembly and adopted this Sustainable Development goals. And Sendai Framework, as I spoke about, that Sendai Framework was also adopted by in a UN conference in Sendai, adopted by 187 countries. So basically the agenda, 2030 agenda for SDG, recognizes and reaffirms the urgent need to reduce the risk of disaster. That is how they are interconnected. So here in SFDRR, we talk about shifting from managing disasters to managing disaster risk. So it means risk assessment and risk reduction has more importance than response. Although response is equally important, but response is something which has over the years has been developed, but mitigation is something which has still needs lot of things to be done in that area. So SFDRR, you can see that there are 7 global targets. We need to reduce mortality, we need to reduce affected people, need to reduce economic losses, and we need to reduce damage to critical infrastructure and disruption of basic services. And for reducing all these 4 aspects, we need to construct more resilient infrastructure. And in order to there are 3 targets where we need to increase. What we need to increase is, we need to increase countries with national and local DRR strategies. We need to increase international cooperation with to developing countries, and we need to increase availability and access to multi-hazard early warning system and disaster risk information. So this is how these 7 target areas are there. And there are 4 priorities also, that we need to understand disaster risk. In order to reduce, we need to understand reduce risk, we need to understand the disaster risk. Hota kya hai? Then we need to strengthen disaster risk governance to manage disaster. We need to invest in disaster risk reduction for resilience. And we need to build back better. This is how it is interrelated. It will take a lot of time actually if I go and explain each one of it. Main thing is that that SFDR and SDG both are interlinked, and in order to actually achieve SDGs, we need to implement SFDRR as well. Otherwise, it cannot happen. Here, I will give an example of interlinkages of DRR in Sustainable Development Goal number 9, which talks about industry, innovation, and infrastructure. And it is one of the 17 Sustainable Development Goals adopted by UN General Assembly in 2015. And it aims to build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization, and foster innovation. And here we talk about investment in infrastructure, and which has to be disaster resilient actually. So the linkages are like infrastructure development is the key focus of the government policies, and disaster resilient transportation, all kind of like airport, roads, ports, and railways, which are actually a lot of projects are happening. So these has to be disaster resilient. And for actually these increasing the resilience, we have to do risk sensitive planning basically. So that issues are that the frequency of disasters are increasing, creating sustainability issues are also there. So we need to have risk sensitive land use planning is something which we need to think about when we talk about resilient infrastructure. So here the Prime Minister 10-point agenda for disaster risk reduction.
We can we'll talk about, like, we can talk each one of it, but we'll talk about the first one, the foremost agenda, which talks about that all development sectors must imbibe the principles of disaster risk management, and this will ensure that all the development projects should contribute to the resilience of community, and they should seek to serve. Over the next couple of decades, most of the new infrastructure in the world will come up in our region, and we need to ensure that we build it to the best available standards of the disaster safety. So this is disaster management plan. It is a dynamic document, and it keeps on, revised by NDMA, and it is available on the website also. It is aligned with all the 3 frameworks, international frameworks, SDG, SFDRR, and COP26. And it talks about what educational agencies and other agencies has to do for ensuring disaster resilience in education sector or any other development sector. So the second part of my presentation is why disaster management in college or university is important. Just a minute. You all will agree with me that when we talk about any university or a college, it means we are talking about the bright future of the students. We are nurturing the future of the country. And one of the best infrastructure of that particular area and the human resource is available in the country, is actually in the university. If I talk about university, Delhi University, I have been to various universities. In central universities, you can see JNU, Jamia Millia, or many other universities in the state, although I have not visited many in other states, but in Delhi mostly. So I could say that it has one of the best infrastructure and human resource available, and we need to safeguard them. That is something I feel is extremely important. When you talk about density, it has a typical type of density. You have more youth in university area. You have more youth related residential facilities. So the most important segment of our society, the nurturing future, the youth, is residing in university, in the college, in the school. So it is बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें क्यों एक disaster management plan की जरूरत है इस तरह की जगह पे, जहाँ पे अगर हम chemical की बात करें तो each in a university there would be many colleges, and each college has a lab also. There could be 2-3 labs also. So kitchen भी है, furniture भी है, chemical lab भी है, biological lab भी है. So there are so many vulnerabilities are also associated with them. Probability of fire or chemical disaster are high, as it resides many laboratories, kitchens, and furniture. Any disaster in such location can have a great impact on the humankind. So university or college, being an education institution, having so many young brains working together, or responsibility towards the society. It is not just those who are actually responsible for our future are also vulnerable. So we need to see how that segment has to be addressed. And we need to create more responsible citizens, in the sense that they should not only think about the university DM plan, but they have to go beyond it. University क्या है? एक एरिया में कोई यूनिवर्सिटी बनता है तो उसके आसपास का जो 5 किलोमीटर का एरिया है वो भी डेवलप हो जाता है, वो भी ओवर डेवलप्ड हो जाता है, आई शुड से, बिकॉज बहुत सारे उससे एसोसिएटेड पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन, गेस्ट हाउसेज, हॉस्टल्स, फोटोकॉपियर मशीन्स, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, सम यूपीएससी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट्स भी आसपास जो है क्रॉप अप हो जाते हैं. तो जब हम इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना आसपास भी हैपहज़र्ड डेवलपमेंट क्रिएट होता है, और आप एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में है, उसके अंदर आपका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है. तो I believe that university should take lead role in preparation of disaster management plan, although there is no as such government guidelines which gives you stepwise, how to make a university DM plan. But of course, we have detailed guideline on school
a disaster management plan, which is being published by NDMA, and many such documents are available on NIDM sites also. And Directorate of Education also have given guidelines on how to make school disaster management plans and how school safety is important. But I believe equally college and university role in disaster management is important. We have already talked about that, how they're important into research and into the future innovative innovations, but how they're important in building resilient, community is also extremely important. So this is a part which actually going to be covered by Nakul, Tarun and Tanushree tomorrow. It is only few things which I want to highlight because I have my slot today. So one thing is, which is very important, is that we need to identify the local hazard within and outside the institution. It is not just within the institution what is happening, but also what is outside the institution is happening. And data is something extremely critical, which actually ensures that how hazard risk vulnerability assessment will be. And we need to also identify the vulnerable persons, which could be the disabled, and also we have to be little gender sensitive while we talk about vulnerabilities. Then we need to see how our structure is. So location, why I said location, because it becomes very important when you are in earthquake zone. I know Rajasthan is in zone 3, most of the area in zone 2. So not much technical tectonic events are maybe a probability or may not be, because research says that these tectonic zones have, these zone 4, zone 3, zone 2, these have nothing to do with the earthquakes. In zone 3, while we were in Latur, earthquake happened, it was in zone 2. So when Bhuj happened, it was in zone 3. So later on, they were made as zone 5. So it all depends on that. But बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि we must know how our active fault lines and thrust lines are there. तो geotectonical जो maps होते हैं उसकी बहुत ज़रूरत है. उसमें हमें कैसे अपने जो seismic hazard assessment है active faults को, जैसे मैंने इसमें किया हुआ है कि क्या किया है कि उस particular area के active faults and thrust towns को उसको हमने यहाँ पे मैपिंग किया है उसका, और उसके ऊपर we have checked the location of the towns. So this kind of exercise can be done to see that how seismically we are located. And in case of Himachal Pradesh, we can see that how this Dharmshala, Manali, Mandi, Rajgarh, Nahan, they are actually located on the main boundary thrust and main central thrust, which are the fault lines. And the research says that mostly, the ground rupture occurs on the fault line. So we have to see that how we are located tectonically or geologically or geographically or physiographically. We need to see our settings. And then frequency, that is very important, and how much frequency of that particular event. It is because I have done the work on earthquakes, so I have this earthquake related map. Otherwise, on other things also, you can see how you are, how many events are there. This is, for example, like Mandi town. I have done this study specifically for a particular city to see that how things are there. This place is vulnerable to, you can see that it's a landslide prone zone. You can see that there are so many hills are there. The river is also flowing, and so highly densely built Mandi city. So you can see that how many vulnerabilities are there, and then it is on zone 4 also earthquake wise. So we can have multiple disasters, we can have multiple hazards, and primary, secondary hazards are also there. Chain reaction can also be there. For example, if there is an earthquake, it can lead to landslides, it can lead to fire, it can lead to some other events which we have not foreseen. So whenever we think about a disaster plan, we have to think about multi-hazard approach and how one hazard can lead to other hazards, other disasters. So in this particular map, what I am trying to show, this is a Mandi town, actually town area. And on this, I have actually overlaid the geotectonical features of the
of the town. You can see that this river Vyas is flowing in the middle of the city. And then you have fault lines here, how this fault line is going. Vyas tributaries are all around. So the liquefaction rate will be high because this is how its geotectonic feature says. And then I have actually, these small dots are the important locations of, I think, okay. Okay, so you can see this, just a minute. Yeah, yes. So you can see the important, these dots are the important lifeline critical infrastructure buildings, basically, which are located, how they are located in the city. So you can see that how most of these buildings are located around the river and around the fault line. So we can understand that what kind of scenario will be there if in case of any earthquake happens over there. So this way we have to understand how technically the risk will be there. So here, this is a school, college actually. This is a government college of Mandi. And you can see that it is also near to a river, could be a tributary also. And again, you can see this is a landslide prone area, flood prone area, and zone 4 we have already said. And then fire is also another hazard. And here these students are actually helping the villagers in extinguishing the fire. So because they have learned it in their college, so they are able to help. So this is how everything is interrelated, the risk, how the risk can encourage and how risk can be reduced by increasing the coping capacity. So how now the capacity assessment is also important. You can see, we will discuss it maybe tomorrow, but by picture I can show you. This is an old structure there. They have 2 buildings, and this is the old one, which is highly vulnerable to earthquake, landslide, flood, and fire. So what they have done, they have made a mitigation plan. You can see this mitigation plan. They have identified the threats, and then they have also discussed about the structural measures for mitigation. Means that how the physical, how the risk can be reduced through different measures like repair. They can do the repairing work in some areas. For this old building, they have suggested the demolition because it cannot be retrofitted now. So they feel that it should be demolished and should be shifted also because it is in the landslide prone, flood prone area also. And there should be a retention wall constructed because it is on the flood prone area. And landslide, how landslide could be, taken care of, such measures we need to see. So such kind of mitigation measures need to be identified. And then similarly, non-structural threats, which we are talking about, that furniture, hanging photo frames, fans, almirahs, electric wires. So how these can actually pose threat to the college building, and what kind of measures can be taken, like secure non-structural building elements and furnishing, like fixed bookcases, almirahs, book cabinets. There are actually many videos and many such presentations even we all have actually to discuss about each one of these things. And I'm sure we have 2-3 such presentations which are going to discuss about these areas also in future. It is just to give you a glimpse that how these things are important in a disaster management plan of a college or a. So we need to, like, all college building have been dismantled. So this is the one work which they have done under the DM plan, not just do identify the work, but also complete it. And what should be the preparedness measures and how the training can be given to the children. And these are the preparedness measures, like you have to create some resource inventory, you have to identify the critical resources, mock drills, and emergency responsibilities have to be given, and how you make the resource directory. So these are the components which actually we need to take care of. We need to make SOPs actually for evacuation, during how to prepare for an evacuation, and then during an evacuation, emergency evacuation, and these things because these will be discussed. So our evacuation route map should also be prepared.
And you can see that how this meeting area you have to delineate, and we should keep all these information available on our website. It should be properly, designed and also exhibited properly. Nakulji have very nice maps actually, so I am not going into it, just because trying to give a overarching support that how next 2 days will be very interesting, encouraging, and a kind of learning experience we're going to have. And these kind of IC material and certain things should be prepared and exhibited in our important places, so that we know that where are the threats and how and what kind of steps we should take. And these things should also be on our website. So in the end, I would say the education sector is highly vulnerable to various hazards, and their safety and resilience should be the utmost priority of all the stakeholders involved. And the scale of damage of educational institution actually depends on the number of factors. Also, the time of event is very important. If it is in the night, the degree of the vulnerability will be more or less. You have to judge that, because it could be a residential college, so it has a different picture. So everything depends, because it is a different institution. You have morning, you have many people, different people coming from various places, and in the evening there are less people. So this is how it is. Not going to take much time. We need to safeguard our students, our college students, our researchers, and most importantly the senior professors and the people, those who are working over here. And I wish that we could do a little bit from this presentation also. I could help you, and in the next 2 days also we should be able to help you in how to make a university DM plan, which may not be that beautiful, but it may be more useful. Thank you very much. Thank you, Dr. Garima. We actually set the tone for a whole training program, and some of the important institutional structure in India and globally and regionally, which are important to understand for the participant, and the various aspects of the DM plan. Certainly, we will take details of DM plan in day 3. And moving ahead, we have Professor Karunesh Saxena, Honorable VC of Sangam University, and he will be taking a session on application of innovative technology for disaster management. I'll request all the participants to stay with us because since it is the day 1, so inaugural also takes some time. So kindly stay with us, and we'll open the session in the end for question and answer. Over to you, Dr. Saxena. Thank you, Tanushree ji. And इनॉग्रल भी बहुत अच्छा हुआ. टेक्निकल सेशन डॉक्टर गरिमा का बहुत इंसाइटफुल था, बहुत बढ़िया. और मेरे सामने बस एक डिलेमा है कि मैं अपने सेशन को पूरा करने की तरफ ध्यान दूं या पार्टिसिपेंट्स की कन्वीनियंस को देखूं, क्योंकि हमने 2:30 पर सेशन शुरू किया था और कायदे से हमें 4:30 पर ही खत्म करना है, लेकिन 15 मिनट में मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा. तो मैं थोड़ा बीच का रास्ता निकालना चाहता हूं कि मैं 10 मिनट एक्सटेंड करके और 4:40 पे इसको समाप्त करूंगा. Yeah, we can wind 4:40. We'll try to wind it up by 5. जी हाँ. 4:45 तक you can take, sir. आप ले सकते हैं, आधा घंटा है हमारे पास. ठीक है. परफेक्टली ऑल राइट. थैंक यू. मैं मुझे एक तो को-होस्ट बना दीजिएगा थोड़ा सा, और एट द आउटसेट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो संगम यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़े हुए हैं. तो यू विल बी ग्लैड टू लर्न कि हमारी यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी ओपन किया है, और फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स तीनों लेवल के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं. और कुछ ऐसा मैं तो कहूँगा बुरा संयोग रहा कि जिस दिन हमारे जो है वो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के HOD ने ज्वाइन किया, और उसी दिन या अगले दिन ही हमारे यहाँ जो एक इंजीनियरिंग का वर्कशॉप है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, और उनकी एक्सपर्टीज को हम यूज कर पाए उस समय. तो ये रहा. हालांकि इसके अलावा हमने कई सारे मॉक ड्रिल्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं,
और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरीके से काम किया जाए। इसके अलावा मेरा प्लान है कि हम ISO 9000 का सर्टिफिकेशन बहुत शीघ्र लेने जा रहे हैं। तो ISO 18000 जो है वो सेफ्टी मैनेजमेंट का ISO सर्टिफिकेशन, उसके लिए भी हम आज का सेशन सुनने के बाद में मुझे प्रेरणा मिली कि हम ISO 9000 के साथ साथ ISO 18000 का सर्टिफिकेशन भी प्लान कर सकते हैं, तो दैट कैन बी बेटर। इसके अलावा हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो कई प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे बात करते हैं और किस तरीके से अर्थक्वेक के टाइम में कैसी बिल्डिंग बनाई जाए जो कि अर्थक्वेक आने पर तो यूं झुक जाए और फिर अर्थक्वेक चला जाए तो वापस अपनी जगह आ जाए। जो रेजिलिएंट बिल्डिंग्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे जापान में कई जगह इस तरीके का स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन हमने देखा है। इसी प्रकार से जो हमारा माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर के साथ में MOU है, तो हम लोग काफी सारे माइनिंग सेफ्टी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर आपको पता होगा कि भीलवाड़ा बीइंग द टेक्सटाइल सिटी और दूसरा माइनिंग का भी बहुत बड़ा हब है। तो माइनिंग कंपनीज में काम करने वाले जो मैट्स वगैरह हैं उनकी ट्रेनिंग और उनको माइनिंग सेफ्टी के बारे में जानकारी देने के प्रोग्राम्स भी संगम यूनिवर्सिटी चलाएगा। मेरे परिचय में जैसा बताया गया था कि मैं UGC की तरफ से NEP की बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में मेंबर हूं, और NHEQF जो बना है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का भी मैं मेंबर रहा। तो मैंने अपने प्रयासों से संगम यूनिवर्सिटी को NEP अलाइन कर रखा है। और अभी जो आपने कहा कि हम UGC का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है UG और PG लेवल पर, उसको भी हम अगले सेशन से शुरू कर देंगे ताकि ये हमारा जो अलाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो विद दीज ओपनिंग रिमार्क्स मैं आपको अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप उसको ना केवल ध्यान से सुने बल्कि आप उसको जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए वो भी आप मुझसे आराम से इसमें पूछें। मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको कुछ छोटे से 1-2 वीडियोस भी दिखाना चाहूंगा तो टू इलस्ट्रेट माय पॉइंट। और मेरे PPTs अगर आपको दिख रहे हो तो एक बार मुझे इंडिकेट कर दीजिए। फुल स्क्रीन में दिखना चाहिए। Yes, sir. It is visible. ओके, थैंक यू। तो ये काफी इंट्रोडक्टरी चीजें हमारे जो पिछली स्पीकर है डॉक्टर गरिमा अग्रवाल, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बता दी हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि करीब 30 ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स हैं जो इंडिया को वल्नरेबल बनाते हैं और जिससे कि हमारा इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन डेवलपमेंट एडवर्सली अफेक्ट होता है। आप मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके के जो जोन्स हैं, रिस्क जोन्स हैं, उन सारे के बारे में मैं वो भी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको जल्दी से एक टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स के बारे में एक वीडियो दिखाना चाहूंगा और फिर हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स की बात करेंगे। वीडियो विथ ऑडियो आपको सुन आ रहा है आप तक? Yes, sir.
तो हम आगे बढ़ते हैं और वापस प्रेजेंटेशन पर जाते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक बीइंग मोस्ट कॉमन हियर, और कई सारे तो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, कई नेचुरल डिजास्टर्स भी हैं, वाटर क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं, फ्लड, हेल स्टॉर्म, क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, ड्रॉट्स, हरिकेन्स एटसेट्रा। इसी प्रकार से जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शंस, टॉर्नेडोज एटसेट्रा। बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, जैसा हमने अभी बातचीत कर रहे थे इनॉग्रल में, वायरल एपिडेमिक्स की, अभी कोविड पेंडेमिक से जो है दुनिया उबर के आ ही रही है धीरे धीरे। पेस्ट अटैक्स हैं, कैटल एपिडेमिक, अभी लंपी वायरस चल रहा है गायों में, वो प्रॉब्लम राजस्थान में भी है, लोकस्ट प्लेग्स एटसेट्रा, ये बायोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स भी हैं, जैसा बताया गया कि भीलवाड़ा बीइंग इंडस्ट्रियल सिटी, तो कई बार यहाँ पर भी कभी प्रॉब्लम होती है, टेक्सटाइल के गोडाउन्स वगैरह में आग वगैरह लगती है। केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, माइन शेफ्ट फायर्स, ऑयल स्पिल्स एटसेट्रा। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले जयपुर में इंडियन ऑयल डिपो में आग लगी थी, वो 1 महीने तक करीब उस पर काबू नहीं पा पाया था। न्यूक्लियर डिजास्टर्स भी इसमें आते हैं, जो रेडिएशन पॉइजनिंग एटसेट्रा। मैन मेड डिजास्टर्स तो बहुत सारे हैं, अर्बन एंड फॉरेस्ट फायर्स, ऑयल स्पिल, द कोलैप्स ऑफ ह्यूज बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। ये अभी हम देख रहे हैं कि बारिश के समय में कई बार जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाती हैं, या राजस्थान में मैंने ये देखा है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें कई बार जो है वो कई छोटे छोटे गांव वालों की गलती से वो बीड़ी पी करके जलती हुई वहां पर माचिस या बीड़ी फेंक देते हैं, तो उससे जो एक चेन का फॉरेस्ट फायर शुरू होता है वो भी कई दिनों तक खत्म नहीं होता और काबू पाना उस पर मुश्किल होता है, और एनवायरमेंट को भी इसका काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस की तरफ, जो कि 4 फेज में इसको मैं डिस्कस करूंगा। और बेसिकली बिफोर डिजास्टर 2 स्टेप्स हैं। बिफोर डिजास्टर हो उसके पहले हमें मिटिगेशन प्रिवेंशन पर ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ प्रिपेयर्डनेस पर भी ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा कि अभी कुछ साल पहले तक, 6-7-8 साल पहले तक जो साइक्लोन्स वगैरह आते थे तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ करता था, और खासकर ये उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है वहां पर आपने देखा होगा कि ये प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब जिस तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो अब अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलने से पहले से पता चल जाता है कि किस मैग्नीट्यूड का किस इंटेंसिटी से जो है साइक्लोन हिट करेगा किस कोस्टल एरिया को, और वहां पहले से तैयारी हो जाती है। सेकंड जो फेज है वो है ड्यूरिंग डिजास्टर। इसमें थर्ड स्टेप आता है रिस्पॉन्सिवनेस, कि अब जब डिजास्टर हो ही गया है तो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट। और आपने ये भी नोट किया होगा कि इस ऐसे मौकों पर कम्युनिकेशन इज वेरी वाइटल, लेकिन सबसे बड़े जो अटैक होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो मोबाइल टावर्स के गिर जाने के कारण जो है कम्युनिकेशन ही एडवर्सली अफेक्ट होता है। इसलिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट करने वाली जो टीम्स है, रेस्क्यू टीम्स हैं, उनके पास में सेट फोन्स वगैरह, सैटेलाइट फोन्स वगैरह का होना जरूरी है, जो कि इस तरीके की मोबाइल टावर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो जस्ट मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आफ्टर डिजास्टर, अब डिजास्टर हो गया और खत्म हो गया, तो फिर जरूरत है रिकवरी की, के रिपेयर करने की, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो बैक टू नॉर्मलसी आया जा सके। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस के। पहला है मिटिगेशन प्रिवेंशन, कि अगर हम होने के पहले ही रोक सके, उसे प्रिवेंट कर सके तो ये अच्छी बात है। दूसरा, प्रिपेयर्ड कैसे रहे, अगर होना ही इनएविटेबल है तो प्रिपेयर्डनेस हमारी कैसे रहे। फिर रिस्पॉन्स कैसे करें ड्यूरिंग द डिजास्टर, और फिर रिकवरी कैसे करें या रिपेयरिंग वर्क कैसे करें आफ्टर द डिजास्टर। तो अब मेरा जो प्रेजेंटेशन आपसे रहेगा वो बेसिकली प्रेजेंटेशन हमारा इस तरीके का रहेगा कि आईसीटी का रोल किस प्रकार का हो सकता है, और आईसीटी का रोल जो है वो मैं आपको कुछ एस्पेक्ट्स में डिस्कस करूंगा। सारी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना शायद समय के कारण पॉसिबल ना हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर सकूं। ये एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
year's International Day for Disaster Risk Reduction is all about Target G of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. It is about enhancing the accessibility to early warning systems and risk information to everybody. So let us advocate and communicate for an enhanced early warning, early action system in the whole of the world. This is your job as a business owner to set up systems in each department. Why? Just a minute. Next we come to कि आईसीटी किस तरह का रोल प्ले कर सकता है। प्रिपेयर्डनेस में आपने देखा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो हेल्प करता ही है, और जिस तरीके के हमारे मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करता है, मेटेरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है वो सारी आईसीटी बेस्ड है, और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके आधार पर हमें एडवांस में पता चल जाता है कि किस प्रकार का, कितने इंटेंसिटी का डिजास्टर हमें हिट करने वाला है। कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि रेडियो कैन बी ए गुड मीडियम एंड सैटेलाइट फोन्स कैन आल्सो बी देयर। मिटिगेशन किया जा सकता है थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम, लोगों को हम इवैक्यूएट करके और सेफर प्लेसेस पे पहुंचा सकते हैं, एडवाइजरीज वगैरह जारी कर सकते हैं, वो सारा काम इसमें हो सकता है। जीआईएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जीआईएस का रोल कुछ इस तरीके का है कि आपके जो है वो डाटाबेस का मैनेजमेंट किया जा सकता है इसके जरिए, और ग्राउंड ट्रूथ पता चल सकता है, जो कि हम कई बार सैटेलाइट इमेजरी और पिक्चर से, एरियल फोटोग्राफ्स वगैरह से हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जो है डैमेज इस डिजास्टर ने कॉज की है। कम्युनिकेशन लिंक का मैंने आपको बताया, ड्रोन्स कैन आल्सो बी यूज्ड, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैन आल्सो बी यूज्ड। अभी हमने देखा था कि कई बार फ्लडेड एरियाज में ड्रोन्स के जरिए से और यूएवी के जरिए से हम लोग फूड पैकेट्स और दवाइयां वगैरह अफेक्टेड एरियाज में पहुंचा रहे थे। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें जीआईएस का रोल हो सकता है, और पर्टिकुलरली कि कितना डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस प्रकार की रिस्क वल्नरेबिलिटी है, जिसके जोन मैप्स बनाए जा सकते हैं जीआईएस के जरिए। इवन डिजास्टर्स कैन बी फोरकास्टेड, ऑल्टरनेट रूट सॉल्यूशंस कैन बी डेवलप्ड, ताकि हम कुछ उसमें ऑल्टरनेटिव रास्ते सोच सकें। पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टीज एट रिस्क, उसका आइडिया लगाया जा सकता है, और रिस्पॉन्स रिकवरी प्लान्स भी इसके माध्यम से बनाए जा सकते हैं। जीआईएस टेक्नोलॉजी, आपको ये भी बता दूं कि संगम यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा जियो इन्फॉर्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है, और जिसमें कि हमारे जो है मास्टर्स प्रोग्राम इसमें चलता है 2 इयर्स का, और हम उसमें जीआईएस टेक्नोलॉजी को पढ़ाते भी हैं, और साथ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसरो और कई सारे ऐसे डीआरडीओ वगैरह का रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में, पीआरएल वगैरह में जाकर के वहाँ अपनी प्रैक्टिकल स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग भी करते हैं, और अच्छा प्लेसमेंट बच्चों का हुआ है जो कि इस प्रकार के प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी कर रहे हैं। तो संगम यूनिवर्सिटी हैज गुड पोटेंशियल फॉर पुटिंग ए गुड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ NIDM एंड Zone 4 सॉल्यूशंस। ये जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जीपीएस, ये हमें जो है वो काफी सारे अपडेट्स दे सकता है, ताकि जो हमारी डिजास्टर रेस्क्यू टीम्स हैं वो समय पर हेल्प कर सके। इसके बाद में हम सेकंड जो एप्लीकेशन देखना चाहते हैं आईसीटी का, वो सेकंड एप्लीकेशन आ जाएगा आपका, जिसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन आल्सो प्रेडिक्ट दैट they can predict about the earthquakes,
और किस तरीके का पैटर्न होगा, और इवन इट हैज बीन सीन के वो जो कितने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आने वाला है वो भी पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से वोल्केनिक एरप्शंस, जिसका हम कहते हैं कि इनका पता ही नहीं चलता और ऑल ऑफ ए सडन कभी भी एरप्शन हो सकता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और सीस्मिक और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन की मदद से कई बार हम बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि भविष्य में वोल्केनिक एरप्शंस कब होने वाले हैं। इसी प्रकार से हरिकेन्स एंड टॉर्नेडोज के बारे में भी एडवांस जानकारी मिल सकती है। सैटेलाइट इमेजरी को एनालाइज करके, स्टडी करके प्रेडिक्ट किया जा सकता है और ये भी बताया जा सकता है कि ये टॉर्नेडो या हरिकेन जो है इनका किस तरीके का कोर्स रहेगा और कहाँ पर किस तरीके से वो पहुंचेंगे। तो ये सारा यहाँ तक की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो ये भी बता सकती है कि इस तूफान की या ये जो स्टॉर्म आ रहा है इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी या कितना इसमें फोर्स रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। डिजिटल ग्लोब्स ओपन डाटा प्रोग्राम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ AI पावर्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी that provides high quality imagery for disaster response, showing damaged houses, roads, buildings and infrastructure from space. तो जैसा मैंने आपको बतलाया था कि यदि जब डिजास्टर हो ही गया है तो रिकवरी हमारा जो है वो मोटो होना चाहिए। तो उस रिकवरी के लिए भी हमारा जो AI पावर्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है कि कितना डैमेज हुआ है, कौन से अफेक्टेड एरियाज हैं, कहाँ पर बिल्डिंग्स जो है कितनी गिरी हैं, या रोड नेटवर्क कहाँ पर है, किस रूट से किस तरह से हम डिजास्टर टीम्स को भेजें कि उनका रास्ता बीच में टूटी हुई रोड के कारण रोका ना जाए। तो इन सब चीजों के बारे में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसी प्रकार से जो है हमारा एरियल रोबोटिक्स जो है वो भी हमें रियल टाइम में इस डैमेज को असेस करने में मदद करता है। ग्लोबल नॉन प्रॉफिट वी रोबोटिक्स प्रोग्राम जो है वो एक अच्छा प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन नीड्स को आइडेंटिफाई करके और उनके लिए रोबोटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और कई बार जो है वो फ्लाइंग लैब्स के जरिए भी मदद पहुंचाता है। आपने देखा है कि सोशल मीडिया हर फील्ड में काफी मददगार साबित हो रहा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत फास्टर और मोर इफेक्टिव आंसर्स कई बार दे देते हैं। कई बार इस तरीके के विक्टिम्स के भी जो हैं वो रिलेटिव्स वो इनके लिए कंसर्न रहते हैं। तो कई बार जैसे हमने देखा है कई बार ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में कि घर से दूर है जो विक्टिम्स हैं तो उनकी फैमिलीज परेशान होती हैं, तो फिर वहां पर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के जरिए उन फैमिलीज को विक्टिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और आप ये देखेंगे कि मोबाइल वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड मैपिंग MWAM जो टेक्नोलॉजी है ये मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करता है और डाटा कलेक्शन में हेल्प करता है ताकि हम रिलेवेंट डाटा इकट्ठा कर सके। सोशल मीडिया की मदद से आप और भी कई सारी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। अमेरिकन रेड क्रॉस जो है वो बहुत सारे ऐसे फ्री मोबाइल ऐप्स बना करके और कई सारी लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन यूजर्स की फिंगर टिप्स पे देता है ताकि आपको कब किस परिस्थिति में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या डिजास्टर कोई फेस कर रहे हैं तो आप लाइफ सेविंग के लिए क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल घर में ही अगर किसी को एकदम से हार्ट अटैक आ गया तो उस समय पर किस तरह के स्टेप्स लेना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आज की तारीख में पॉसिबल है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में दे सकता हूं। उड़ीसा का मैंने नाम लिया था क्योंकि वहां पर कोस्टल एरिया होने के कारण साइक्लोन वगैरह की प्रॉब्लम काफी रहती है। तो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी OSDMA ने एक स्मार्टफोन बेस्ड प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसका नाम है सतर्क। और इस सतर्क में जो है इन्होंने एक इस प्रकार का अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम बनाया है जिसमें कि इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड सिस्टम है और जिससे कि जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को पहले से वार्निंग मिल जाती है। इसी प्रकार से मछुआरों को पहले से एडवाइजरी जारी हो जाती है कि उन्हें समुद्र में नहीं जाना है इन दिनों में। और इससे काफी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ दोनों काफी बचे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 6-7 साल 8 साल पहले तक जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का
यूज नहीं हो रहा था, तब इस प्रकार के जो साइक्लोन्स थे उनसे जो डैमेज होती थी, उनसे जो लॉसेस होते थे, अब आज की तारीख में उसका 10% भी नहीं रहा। तो ये मैं समझता हूं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन में मानता हूं। इसी प्रकार से आईसीटी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी आजकल नया जो है प्रचलन है। इससे भी हम जो है वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी इन हेल्पिंग एंड ऑटोमाइजिंग डेली टास्क फॉर गैदरिंग डाटा इन डिजास्टर प्रोन रीजन्स। तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, इससे आपका डाटा कलेक्शन आसान हो जाएगा, बिग डाटा एनालिसिस पॉसिबल होगा और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाने में मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी और हम जो विक्टिम्स हैं उनको रेस्क्यू करना और उनको जल्दी मदद दे पाएंगे। तो ये सारा काम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है। इसी प्रकार से जो कई बार आपने देखा होगा कि डिजास्टर्स के टाइम पे और खासकर कम्युनल राइट्स के टाइम पे आपने देखा होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन काफी चलता है और अफवाहें वगैरह काफी उड़ती हैं। और कई बार अनफॉर्चुनेट ये रहता है कि जो आपका इंटरनेट है या जो आपके व्हाट्सएप वगैरह हैं, जो कि उसमें रेस्क्यू में और हेल्प करने में सहायक सिद्ध हो सकते थे, लेकिन इस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार इनको जानबूझ करके ये इंटरनेट सर्विसेज बंद करके और व्हाट्सएप वगैरह पर जो है कम्युनिकेशन बंद करना पड़ता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मैं मानता हूं, क्योंकि अदरवाइज तो हमारे हाथ में ये इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प ली जा सकती थी। इसी प्रकार से अगर हम आजकल बात करें तो इंडस्ट्री 5.0 की बात हो रही है। इंडस्ट्री 5.0 में इंटेलिजेंट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात होती है। तो इंटेलिजेंट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि इंटेलिजेंट डिजास्टर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, IDDSS। तो ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक स्मार्ट जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जहां पर कि ऑप्टिमाइजेशन और सिमुलेशन इंजन यूज करके और इंटेलिजेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसमें बहुत सारा डाटा फीड रहता है, बहुत सारी पुरानी सिचुएशन, जैसे गरिमा मैडम बता रहे थे कि मंडी का उन्होंने एग्जांपल दिया था। तो इस प्रकार के बहुत सारे केस स्टडीज और उनसे रिलेटेड डाटा रहता है जो कि आपको फ्यूचर में इस सिमिलर टाइप ऑफ डिजास्टर्स होने में आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने जो है वो डिसीजंस लें ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपरली हो सके। तो ये सारी बातें मैं बताना चाह रहा था आपको। पॉलिसी मेजर्स पर डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। जैसा बताया गया कि यूजीसी ने भी अपनी पॉलिसी में डाल दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम यूजी-पीजी के लिए। इसी प्रकार से जो है वो NDMA और NIDM बहुत कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये हम जो हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोएक्टिव एप्लीकेशंस को भी हम शामिल कर लेंगे और एक होलिस्टिक पर्सनल पॉलिसी हम फ्रेमवर्क अगर बना लेंगे जो कि IT इनेबल्ड होगा, तो मैं समझता हूं कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है फ्यूचर में और अधिक इफेक्टिव हो जाएगा और लाइफ ऑफ द पीपल विल बी मच मोर सेफर एंड ऑल। लेकिन मैं लास्ट में कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के अकेली टेक्नोलॉजी के भरोसे हम नहीं रह सकते। टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट रिजॉल्व ऑल दी रिलेटेड इश्यूज। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो हमारी पीपल है, जो हमारी जनता है, जो हमारे पॉपुलेशन है, सिटीजन्स हैं, उनका रिस्पॉन्सिव होना, उनका अवेयर होना, उनका अलर्ट होना और उनका एक दूसरे से मिलजुल करके कोऑपरेटिव वे में और टीम वर्क के वे में साथ में मिल करके काम करना होगा, तभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट एफिशिएंटली कर पाएंगे। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपने तनुश्री मैडम दैट आई कुड एड्रेस द पार्टिसिपेंट्स थ्रू दिस सेशन। मैंने पहले भी NIDM और जोन 4 के साथ में कुछ सेशंस लिए हैं, तब मैं वाइस चांसलर नहीं था, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो जब तनुश्री मैडम ने मुझे अप्रोच किया कि संगम यूनिवर्सिटी के साथ में ये प्रोग्राम करना है, तो मैंने मैडम से एक ही शर्त रखी कि मैंने कहा मेरा भी एक सेशन होगा। और थैंक यू वेरी मच। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू सर। और आपका सेशन बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि जब पहला सेशन में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस समझे और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो डॉक्टर गरिमा ने डिस्कस किया, उसको ऑन ग्राउंड विद एनहांस्ड टेक्नोलॉजी, IT बेस्ड टेक्नोलॉजी हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सर्टेनली ये सेशन उसमें बहुत
सपोर्टिव रहा। और आपने सही बात की, सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी से हमें नहीं मतलब हम लोग डिजास्टर को मिटिगेट कर सकते हैं, हमें कम्युनिटी लेवल तक उसको पहुंचाना, उसको चलाना, और समय पे वो टेक्नोलॉजी वर्क करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसके बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं। कई बार इससे अफवाहें भी फैलती है और कई बार ये सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमारे अपने बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम इन टेक्नोलॉजीज का कैसे इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। अब आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस है ऑडियंस और पार्टिसिपेंट के साथ, तो वो अपने हैंड को रेज करके और पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गरिमा और डॉक्टर करुणेश अभी अवेलेबल हैं। राजकुमार जैन है। हाँ जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछें। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। जी बताएं। मैम मेरा क्वेश्चन है प्रोफेसर करुणेश सक्सेना। आई एम लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन एनसीसी ऑफिसर एंड अपॉर्चुनिटी टू मैनेज अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। किस डिफरेंट सिचुएशन आती है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है राजकुमार जी। होता है कि मैम आवाज आ रही क्या? हेलो जी 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 बताएं। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है प्रोफेसर करुणेश सक्सेना सर से। लाइक एट अ टाइम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसीजन मेकिंग का। लाइक वी हैव टू डिसाइड द इंस्टेंट डिसीजन। तो वो कितनी बार होता है कि वो डिसीजन हम एक इंस्टीट्यूट के फेवर में लें, एक सेल्फ फेवर में लें, एनसीसी कैडेट के फेवर में लें, या एक एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में लें, या स्टेट के फेवर में लें। तो डिसीजन हम किस टाइप से और उनका कम्युनिकेटिव एक किस तरह से हम कड़ी में जोड़ सकते हैं। तो मैं प्रोफेसर सक्सेना सर से थोड़ा सा राय लेना चाहूंगा कि इस तरीके के डिजास्टर में डिसीजन को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। जी हाँ जी, नहीं राजकुमार जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं यही कहूंगा कि डिसीजन मेकिंग के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत है, क्योंकि डिजास्टर्स अक्सर जो है वो ऑल ऑफ ए सडन स्ट्राइक करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्स्ट अफेक्टेड है कम्युनिटी, उसके फेवर में डिसीजन होना चाहिए, ताकि उनको इमीडिएटली रिलीफ मिल सके और उनको तुरंत सांत्वना मिल जाए। तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को सेल्फलेसली काम करना चाहिए। एनसीसी का तो ये काम ही है सेवा भाव से काम करना। तो एनसीसी के वॉलंटियर्स और एनसीसी के ऑफिसर्स तो हमेशा ही फील्ड में मुस्तैद खड़े रहते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। और मैंने ये एक और चीज नोट की है कि बहुत अनुशासन एनसीसी में देखा जाता है, जिसकी बहुत अधिक जरूरत है डिजास्टर मैनेजमेंट में। क्योंकि अगर 25 लोगों का ग्रुप है और सब लोग अलग अलग अपने अपने मन का करने लगे, तो फिर डिसीजन मेकिंग करने वाले लोगों का डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ यूनिटी ऑफ कमांड है, और जो ऑफिसर उनको वॉलंटियर्स को, कैडेट्स को जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसको वो सब मिलजुल करके बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत क्विक रिलीफ देने की जरूरत है। हमारी सारी डिसीजन मेकिंग उसी तरफ गियर्ड अप होना चाहिए। थैंक यू सर। मेरा सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी हाँ जी हाँ। देखिए, मैं प्रकाश शर्मेरा बोल रहा हूँ नॉलेज फाउंटेन इंस्टीट्यूशन से। मेरा सवाल आप दोनों के लिए है कि नॉलेज मैनेजमेंट एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। मुझे लगता है कि अगर आईसीटी का इस्तेमाल करें नॉलेज मैनेजमेंट के लिए, तो वी कैन लर्न वाइटल लेसन्स एंड वी कैन यूज देम व्हेन द इवेंचुअलिटी कम्स। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा किसी ने प्रोजेक्ट किया है जहाँ कुछ हादसा हुआ है, डिजास्टर हुआ है, और नॉलेज मैनेजमेंट के जरिए कुछ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स देने की कोशिश की गई है? आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आईसीटी का क्या रोल हो सकता है नॉलेज मैनेजमेंट में, स्पेशली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और मैं मैडम से पूछना चाहूंगा कि एनआईडीएम की ओर से कोई नॉलेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट किया गया है क्या? कैन वी स्टडी दैट? थैंक यू। सर आप जवाब। हाँ जी सर,
चलिए, आपसे भी जितना प्रश्न। जितना सुना है उस पर मैं जवाब दे देता हूँ एक बार, ताकि वो बाय द टाइम ही रिकवर्स हिज सिग्नल। देखिए, नॉलेज मैनेजमेंट में हम बात करते हैं दो प्रकार की नॉलेज की। एक होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक होती है टैसिट नॉलेज। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज तो हमें दिखती है, विजिबल होती है, टेंजिबल होती है, तो हम उसको ग्रैस्प करके उसका मैनेजमेंट थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो टैसिट नॉलेज होती है वो इनविजिबल होती है, छुपी हुई होती है। और मैं समझता हूँ कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट में टैसिट नॉलेज का ज्यादा यूजफुलनेस होती है। मैंने अपनी जो लास्ट वाली स्लाइड दिखाई थी जिसमें इंटेलिजेंट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स की मैंने बात की थी, तो वहां पर जो एक इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स की, जो हम इंटेलिजेंस डिजास्टर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स की जो बात कर रहे थे, IDDS की, वो बेसिकली यही चीज है प्रकाश जी, कि आपने पीछे के जो हादसे हुए, जैसे मान लीजिए चेरनोबिल का न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे उन्होंने इतना डाटा, इतनी लर्निंग, इतनी सारी चीजों को उन्होंने कैप्चर करके, और फिर उसके बाद में उन्होंने ये कोशिश की कि अब भविष्य में कभी इस तरीके का न्यूक्लियर डिजास्टर ना केवल रशिया में बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं पर भी इस तरीके का एक्सीडेंट दोबारा ना हो। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और आपने बहुत अच्छी पॉइंट रेज किया, क्योंकि नॉलेज मैनेजमेंट का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आईसीटी के बिना तो नॉलेज मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है। हाँ, कोई ऐसी स्पेसिफिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में केस स्टडी अगर हो, और जिसके बारे में अगर हमारे जोन 4 के या गरिमा जी बता पाए, तो मेरी भी नॉलेज एनलाइटन होगी उस बारे में। थैंक यू। डॉक्टर गरिमा, आप इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? I think she is not available right now. We can take another question if audience have. सीमा शर्मा मैम है कोई? हाँ सीमा, बताइए। सीमा, आवाज नहीं आ रही। हेलो, एम आई ऑडिबल? थोड़ा और लाउड करें, अभी नहीं आ रही आवाज। हेलो जी, मैं ऑडिबल नाउ? हाँ बताइए। I'm having one futuristic question. Actually, we are in primary phase of using technology. और जैसा हम देख रहे हैं, तो कोरोना वगैरह की वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो मिसयूज ज्यादा हो रही है। In future, we will definitely face the digital disaster. So I just want to know how to deal with it. We should prepare for that. Or हेलो तरुश्री, आपको सुनाई दिया क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन एक्चुअली। जी नहीं, सीमा सुनाई जी नहीं दे रहा। बेटर है सीमा जी कि आप करके चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए जी। वैसे मैं जो थोड़ा बहुत जो समझ पाया है शायद वो ये है कि बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्रूटफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द केस ऑफ डिजास्टर। हाँ, कोरोना पेंडेमिक का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। कोरोना पेंडेमिक के टाइम में आपने देखा था कि जो कॉन्टेक्टलेस सर्विस होना चाहिए, तो मैं यहाँ का एग्जांपल दूंगा। जयपुर में जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, SMS मेडिकल कॉलेज है, वहां पर उन्होंने रोबोट्स वहां पर इंस्टॉल कर दिए थे एंट्री पॉइंट्स पर, जो कि इनकी थर्मल स्कैनिंग वगैरह करना और उनको जो है कई बार प्रॉपरली मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, और उन सारे चीजों में वो काम में आए थे। इसी प्रकार से ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ है और ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक वेरी इफेक्टिवली। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो रियल टेस्ट है वो कोविड पेंडेमिक के मैनेजमेंट में मैंने काफी देखा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और अपने इंडिया में तो चूंकि हम वी आर IT सुपर पावर, तो हमने देखा है उसको कि काफी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल, यस। Sir, actually, I am asking about digital disaster. We are in the primary phase of using technology, but human nature है सर, misuse ज्यादा होता है, और कोरोना की वजह से सब इतना एडिक्ट हो गए सब कुछ। तो फ्यूचर में we will definitely face this digital disaster. So we should prepare for this and how we can deal it.
This is a new term that is very new for the audience here, and you have rightly pointed out the dangers also, because the every side, every technology has two sides. I have been emphasizing on the positive sides, but definitely the negative side is also there. And so we have seen that sometimes the robotics can also boomerang, and there can be some threat to humanity from robotics also. And similarly, the kind of massive e-waste that is being generated because of this thing, more increased use of ICT and all. These are all the pointers for digital disaster. And definitely, it's too early to say now that what kind of strategies should be there. But yes, we should focus our attention towards these things. And I would like to also mention that Seema has immensely helped me in putting together this presentation, which I have shared with all of you today. Thank you. Thank you, sir. Dr. Sir, there is one question in chat box. Knowledge in the mountain terrain, but some question is there related to knowledge management, and lack of agency to provide technical expertise is a huge challenge, basically, to address in context of urbanization in mountainous states. Actually, as a tourist place, they are very attractive. We go there for 2-3 days, enjoy the mountains, and then come back. But then those citizens who are continuously living there, they are living very hazardous kind of lifestyle, because around the clock, throughout the year, when they have to they have to face so many disastrous situations. But I would not agree with you that the agencies are lacking, because nowadays government is very serious about disaster management, and the proof that NDMA and NIDM are there and actively working. And for this thing in mountain areas, two problems are often faced. One is avalanche, and the other is this of landslide. So for these problems, there are agencies who are working to prevent them and to manage the disasters. So that is there. But yes, I would agree with you that the human intervention is causing all these problems, because what is happening, we have the example of Nainital, where the urbanization is there, and then as a result of which the lot of landslide activities are going on there. And even it is said that the in future, I mean future means some 40-50 years down the line, maybe Nainital as a city may not remain in existence. So I agree with you that these problems are there, but I'm sure that the policymakers are there to take care of this problem. We have one more question from Dr. Shweta. Yes. Yes, sir. Dr. Shweta? Hello, good evening to all. Good evening. Good evening. Am I audible? Yes, yes. Yes, you are. Myself, Dr. Shweta Bohra from Sangam University. I just want to ask, being an NSS voluntary, if they want to do work in the disaster situation, so there is a risk factor, because they are self-motivated students. So what we can do for that students only? Shweta, actually, this is a good initiative that you are taking. You are the program officer for NSS students also. I think that this disaster management training should be given to these NSS volunteers first. And then we can have some situations, we can create some mock situations for them, mock drills, etc., where we can test their skills. And then only they can be assigned the responsibility of managing disasters in field. Because NCC training, to my mind, is more rigorous as compared to NSS. And they have their camps and all, where the students have to live in adversity. And they have a lot of adventurous activities and competitions and games which they undergo. So I think that same kind of training and exposure should be given to NSS students. Then only they can be a useful resource.
Okay. Nowadays, there is a concept of disaster risk insurance, and for the Abda Mitra scheme, all the Abda Mitra are also getting registered for insurance policy. If in case they have lost their life during the response processes and all. So state government or district disaster management authorities also initiating this kind of insurance policy for those NSS NCC cadre who are registered with Abda Mitra. So for your city, you can also approach to your district disaster management authority if they provide this kind of services or not. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Dr. Lokesh. Sir, very good evening. Good evening. Good evening. Yeah. सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है सर, आपने सर बहुत अच्छा बताया कि सर हाउ ICT is using in disaster management. There are very very vast technologies are there. सर एक क्वेश्चन है, जैसे जो मैन मेड जितने डिजास्टर्स हैं उनमें सर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी रीजन बन जाती है. मींस जितना एक्सपेरिमेंट्स मोड पे हैं सारी चीजें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये मैन मेड डिजास्टर्स जो है वो उनका रीजन बनती है. तो सर हाउ टेक्नोलॉजी कैन यूज इन दैट सच मैन मेड डिजास्टर्स? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कहना, लेकिन जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी हैज टू बी मेड सेफर, और आपको इसको ट्राइड एंड टेस्टेड वे में यूज करना है, ट्रायल एंड एरर के वे में यूज नहीं किया जा सकता. तो आपको सबसे अच्छा जो एग्जांपल इसमें मैं आपको दे सकता हूं वो है सिमुलेशन का. तो सिमुलेशन के जरिए आप डिजास्टर लाइक सिचुएशंस क्रिएट करके और उसमें टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके फिर जो आपको लगती है कि सेफ टेक्नोलॉजी है उसका ही आप यूज करें, तो मैं समझता हूं कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम आप एनविसेज कर रहे हैं वो नहीं आएगी. जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. I think so it's almost 5 o'clock. मुझे लगता है कि अभी 2 दिन और भी हैं, तो आप सब लोग कल ये सेशन अभी 2 दिन और भी है, तो आप कल और परसों भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सभी सारे लोग उस समय भी अवेलेबल होंगे. और आज आखिरी दिन नहीं है कि सारा कुछ आज ही पूछ लेते हैं. तो मुझे लगता है क्योंकि सभी लोग अब देखिए जा भी रहे हैं, जहाँ पे कोई 300 लोग 350 लोग थे पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब केवल 127 लोग बचे हैं. तो अब और टाइम भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अब इसको हम लोग सेशन को एंड करना चाहिए हम लोग को, अगर डॉक्टर करुणेश कहें तो. और उसके बाद कल परसों भी हम लोग हैं और आप सब लोग वेलकम है. आप लोग, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारा क्वेश्चन लेके आइए, कल जल्दी शुरू करेंगे क्वेश्चन सेशन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, और कल 2:30 बजे फिर से हम लोग सेशन रिस्टार्ट करेंगे. फीडबैक फॉर्म जो है वो लास्ट डे आप लोगों को शेयर किया जाएगा. यही लिंक चलेगा अनुश्री, यही लिंक चलेगा, यही पासवर्ड है. और इवन अगर आपके कोई भी क्लास में फ्रेंड्स वगैरह जो आज किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, इफ दे वांट टू लर्न, तो उनको कल भी बुला करके लाइए, परसों भी बुला करके लाइए, क्योंकि जो नॉलेज मिल रहा है तो सब लोग उसमें हिस्सा ले. कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मुझे ये बोलना था कि जो लोग NIDM के पोर्टल पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर ले. मैं लिंक भेज देता हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट वहीं से जनरेट होएगा सबके लिए. हाँ, आप लिंक दीजिए. आपको बीच में भी देना चाहिए था ये लिंक. मैं उसके बीच में मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा सर. यहाँ लिंक देना चाहिए था चैट बॉक्स में, क्योंकि ये जो 200 लोग चले गए उनको आपका लिंक कैसे मिलेगा अब? दिस इज द लिंक. आप इस पे जाएंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर आप पहले से आपको NIDM के प्रोग्राम अटेंड करते आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सीधे लॉगिन करना है और प्रोग्राम को सर्च करना है, उसके लिए एनरोल करना है फिर. और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, जिनका ये पहला प्रोग्राम है NIDM की तरफ से, वो बाकायदा आगे रजिस्टर करेंगे और फिर उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे. तो इस लिंक को आप अपने ग्रुप में भी शेयर करें जिन्होंने प्रोग्राम अभी छोड़ दिया है, ताकि सभी रजिस्टर कर सके जो आज ज्वाइन. श्रेयस, कल आप प्रोग्राम के शुरू में ही ये लिंक फिर से आप शेयर कर दीजिएगा. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं. कल 2:30 बजे फिर से मिलेंगे और कल भी बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाले हैं क्विक और फायर सेफ्टी पे. तो आई होप जितने पार्टिसिपेंट आज थे वो कल भी अटेंड करेंगे.
Thank you, Saxena sir. ज्यादा आएंगे, ज्यादा। Thank you.